Thank you, ma'am. I hope I am audible, ma'am. Yes, yes. To me, yes. Right, ma'am. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. A very warm good afternoon to all the inquisitive learners who are associated with us for this 1 week online faculty development program. On behalf of Army Institute of Education, Greater Noida, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, I, Pratibha Garg, Assistant Professor, Army Institute of Education, and convener of the FGP, welcome you all on this virtual platform. Today, we are having another interesting session of this 1 week faculty development program. A teacher affects eternity. She can never tell where her influence stops. We are extremely delighted and honored with the presence of such an eminent dignitary, an excellent teacher, and the keynote speaker of today's session, Dr. Usha Grover, Director at Anand Center for Learning and Development. I heartily welcome you, ma'am, in today's session of this 1 week online faculty development program. It is believed that by chanting the Gayatri Mantra, you achieve success and happiness in your life. So I request everyone to please concentrate and recite the Gayatri Mantra to get a sense of happiness. Over to you, Manoj sir. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Thank you, everyone. Inclusion is not tolerance, it is unquestioned acceptance. And to formally welcome Dr. Usha Grover, who is very passionate about her work towards persons with special needs, and to highlight the objectives of the session, I invite Dr. Tanya Gupta, Honorable Principal of Army Institute of Education, Greater Noida. Over to you, ma'am. Thank you, my dear colleague, Ms. Pratibha Garg, who is the convener of this 1 week online faculty development program. On behalf of the management of Army Institute of Education, Greater Noida, I extend my gratitude, my profound and immense reverence to our very, very dear Dr. Usha Grover ma'am, who is a mentor to us and is very, very dear to me personally as a teacher who has always guided me to, initiate into the path of serving children with special needs. Ma'am, we are very honored that you are with us here for a special session as a keynote speaker. And I know how busy you are and how many platforms people have engaged you to speak on inclusion. And certainly there's no one better than you who can speak on the topic that has been allotted to you today. And I'm so very much thankful that you have accepted to be with us.
Dr. Grover needs no introduction, but yes, a person, as Miss Pratibha says, ma'am is passionate about her work, working with children with special needs. She's had a long career where she's worked with children with intellectual disabilities, learning disabilities, and slow learners, and she's a trainer. And ma'am is also there on the forum of development of special education curriculum and launching various programs in special education. And apex bodies like the RCI, IGNU, and many more are utilizing her expertise to evolve a way for these specially abled children. So I welcome you, ma'am, and you will be very happy to know that during this 1 week of online faculty development program, we have about 1,600 participants who are on board. They're enthusiastically here to listen and learn. And it's a diverse group of professors and college lecturers, and we have a lot of special educators, counselors, teachers, and principals of our army public schools as well as the other schools that are across the nation. So all of us are very, very keen to hear on this topic for the day, which is on promoting inclusive and quality learning for children, adolescent, and the youth. And dear participants, I'm very much thankful that you are once again on board with us, and I'm sure you will agree that learning has been disrupted for more than 1.5 billion children and the youth because of the coronavirus, that is the COVID-19 pandemic. And most of our children are outside these schools, they are using remote learning programs, they are studying to whatever best they can through the internet, through television, through radio, or as combination wherever is available of all these. And despite of this fact, there are few challenges, few experiences that all of us, are tackling. Certain inequalities and iniquities in education, and certain questions that how to keep our students safe, our communities safe, as well as how to ensure accessibility and accommodation to our children for remote learning, and how to involve parents and make them more engaged with the learning of their children, and especially for children who are specially abled. So these are few challenges that each one of us have been facing, but nevertheless I would take it on a positive note that the COVID-19 pandemic has served as an opportunity for each one of us to rethink how an emergency situation can be used to evolve an education emergency plan, which can be used for all children. So, with these few things in mind, we thought we must have a session in this faculty development program on how we can promote inclusivity and yet maintain quality in education for children, for adolescents, and for youth. And we are very, very honored to have with us Dr. Usha Grover, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you so much for being with us here today. Over to you, Pratibha Garji. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Uh, Something very magical shall I start? in those classrooms where skilled and caring adults who celebrate diversity are committed to truly inclusive teaching and learning. With this, I would like to formally introduce such a magician, Dr. Usha Grover ma'am. Dr. Usha Grover was working as officer in charge and lecturer in special education at the National Institute for Mentally Handicapped Regional Center, New Delhi, July 2014. At present, ma'am is working as director at Anand Center for Learning and Development, which is an NGO having a special school and vocational training center for persons with developmental disabilities, and also offers diploma programs in education. Throughout her career, she was working
with children having intellectual disability, learning disability, and slow learners, initially as a special educator and later as a trainer. He has published many papers on good teaching practices and curriculum development and contributed immensely in development of study materials for special education programs offered by RCA, etc. She has authored a book titled Play, Fun and Learn, which is very useful for primary school children. She is a nominated member of the expert committee of RCI for development of training programs for the categories of special teachers for educating and training persons with intellectual disability and rehabilitation practitioners in intellectual disability and learning disability. Dear participants, as we were doing in the earlier session, you are requested to post your comments and questions in the chat box, which will be taken by the expert of the session. The feedback link will be shared at the end of the session. Now, I will not take much time and I invite Dr. Usha Grover ma'am to enlighten us on the topic promoting inclusive and quality learning for all children, adolescents and youth. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Tanya ma'am. Thank you, Pratibha ji, for your kind words. You have said so much about me. I hope I do justice to the topic you have given me. At the outset, I must thank Tanya ma'am for inviting me to this forum and making my presentation on inclusion, which was a burning topic all along, and it's still a burning topic. That shows that we are still evolving. So, starting with the presentation, I think I would like to, can I share my screen, please, without losing much time? I can start my presentation. And well, we had been talking about inclusion. I think ever since special education came into existence, in fact, since the NPE came into existence, 1986, right, in different forms, in different words. And even today, we are talking about inclusion, inclusive education. So today, I would like to talk about like, how can we make inclusion accessible to each and every one? Yeah, I would like to share my screen. Can you all see my screen, please? Yes, ma'am. We'll request you to please put it on F5 mode. Okay, I'll do that. Yeah. So, Yes, ma'am. yeah, in layman's word, what is inclusion? I think all of you would say that inclusion is bringing all children with different abilities and needs together to learn under one roof. Yeah, that's what we had been saying all along. But you have to read within the lines. I hope it was so easy that we bring children with different abilities under one roof and our job is done. It's not that easy, and it's not what we really want. So when I say about that bringing all children together under one roof, what do I mean by that? I'm talking about all these children under one roof. That means they may be in one class. So I may have children with different combination of these disabilities along with the regular children in my class if I'm a teacher. I may have children with intellectual disability. I may have children with hearing impairment, visual impairment, multiple disability, learning disability, along with other children, regular children with different race, gender, age, social class, and values. And mind you, in the new policy, NP 2020, and our new Act 2016, we have now 21 disabilities. So all those people can be in your class with different combinations. So what we are talking about today is
that handling inclusion means that all these children, when we are talking about inclusion, that means in any combination, any of these disabled children or children with special needs would be there in your class. And it's your duty to not only handle them, it's your duty that they learn what they are required to learn as per their age and as per their ability. So that's what we are talking about. So I think you have understood what we want. Just imagine a classroom where we have these children in the classroom. We have regular children, maybe 10, 12, 15. Along with them, we have two children with ID, one child with VI, or maybe one child with intellectual disability. So, and different combinations we can have. So this is the classroom we are talking about. Okay. So basically, they are diverse children. As it is, diversity in extreme. Like we have children, regular children with normal IQ, maybe with average IQ, more than average IQ, and children having substantially below average IQ as well. So what is inclusion? The philosophy of inclusion is to deal with this diversity of groups. Okay? And so that we make an environment in such a way which is beneficial for everybody, effective and beneficial for everybody. So it's a mammoth task. It's a very, very complex task which a teacher has to undertake. But it's not difficult, right? We really have to plan. So basically, we are talking about embracing the diversities in the classroom. Okay, so how can we make inclusion possible? How can we make environment accessible? Let's talk about what we are talking about. Our environment means what? What do we want in environment? So, in more detailed term, we are talking about inclusion as a process in which we are talking about reform in a system. We are talking about a system, a reform in a system where we can change, where there'll be a changes and modification in the content because we have to deal with the diversities in the teaching methods, approaches, structures, strategies in education to overcome barriers. और barriers भी बहुत सारे होते हैं. Attitudinal barriers होते हैं, physical barriers होते हैं, emotional barriers होते हैं, social barriers होते हैं. With a vision serving to provide all students of the relevant age group with an equitable and participatory learning experience and environment that best correspond to their requirement and preference. So do you see the difference, how we are evolving in the definition of inclusion? So can you just point out, can you just, see for yourself and focus on the key points, key words here? The key words here are equitable. अभी तक हम बात कर रहे थे इक्वालिटी की, सबको बराबर बराबर बराबर. अब हम क्या कह रहे हैं? बराबर नहीं. जब डाइवर्सिटीज है, एक किसी से कम है तो एक किसी से ज्यादा है, तो बराबर कहाँ से होगा? So we are talking about equity now. This is the new concept. It does not mean equal, but comparative by giving more to those who have less. To equalize opportunity, to readdress their disadvantage. ये नहीं कि जिसको ज्यादा आता है उसको और सिखाए जाओ, और जिसको नहीं आता है उसको मत सिखाओ और वो पीछे धीरे धीरे सिस्टम से निकल जाए, जो कि हो रहा था अक्सर. So we are talking about जिसके पास कम है उसको ज्यादा दिया जाए. Participatory, we are talking about this child, all these children who are marginalized, who come under this diverse category, they should participate and participate actively in the discussions. Parents के साथ भी discussions हो, because without family we can't do anything. We have shifted. There are so many paradigm shifts over the years. हम लोग child center से family centered पे आ गए हैं. Parents के साथ considering their opinion in decision making. Yeah, so that's very very important. कहते हैं ना डेविड वर्नर की, आपने वो सुनी होगी, nothing for us without us. तो उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. और रिक्वायरमेंट कह रही हूँ मैं नीड नहीं कह रही हूँ, मैं रिक्वायरमेंट कह रही हूँ. मैं क्या कह रही हूँ? राइट बेस्ड. ये उनकी रिक्वायरमेंट मतलब उनके राइट है ये
ये सब लेना, उनकी नीड नहीं कि चलो नीड की ये बेचारों को दे दो. इट इज अ राइट टू हैव ऑल दिस थिंग्स. So this is what is inclusion in the practical terms. Now, when I talk about inclusion, I'm believing, this is my firm belief. If you don't believe in all these things, obviously you can't even think about inclusion. So what am I believing? We have to have these beliefs. So every child can learn. We are believing formally that all can learn, every child, and we can bring him to his maximum potential. वो फर्क है कि कोई बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा. अगर यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ. But degrees will vary, but every child has a potential to go up. If we provide equal opportunities to participate, right? If we support with the resources required as per his condition and need, if we taught him in a manner appropriate to her needs, ठीक है. सो ये सब बातें हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हर बच्चा जो है वो अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज डेवलप कर सकता है. We all are different. We are believing. We all are different, except now. We all belong and have a role in society. पर हम सब फर्क है, पर हम सबका रोल है सोसाइटी में. We all contribute to the society, and so are our friends with disability. Difference can and should be valued. हम different हैं, but it should be valued. It should be respected. It should be given dignity. सबके अलग-अलग फर्क है. हम भी तो फर्क है, आपस में भी तो फर्क है. पर वो फर्क हमसे थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क है, तो हम उनको, पर हम ये मान के चलेंगे कि फर्क है, राइट. और सबसे बड़ी बात जो हम ध्यान में रखेंगे, ये हम उनके लिए कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि हम उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं. इज देयर ह्यूमन राइट. ओके, सो ये सब बिलीव्स हमको मान के चलनी पड़ेंगी. ओनली देन वी कैन मेक इंक्लूजन सक्सेसफुल. बात तो हम कब से कर रहे हैं, पर अभी भी आज की डेट में भी क्या हम कह सकते हैं कि हम उस मकाम तक पहुंच चुके हैं जो हम सोचते हैं कि इंक्लूजन में होना चाहिए था. वहां तक तो भी नहीं पहुंचे है ना, बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बट अभी वहां नहीं पहुंच सके जो हम चाह रहे हैं. सो व्हाई इंक्लूसिव एजुकेशन? वी ऑल नो कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू गिव एजुकेशन फॉर ऑल. दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर ऑल. क्यों कह रही हूं मैं ऐसे? आप बताओ, हमारे कितने बच्चे हैं जो डिसेबल्ड है? फॉरगेट अबाउट अदर कैटेगरीज. मैं डिसेबिलिटी फील्ड के नाते में आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ पीपल विद डिसेबिलिटी. कितने, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ डिसेबल्ड फ्रेंड्स? एज पर सेंसस 2011 आप देखेंगे कि अराउंड 2.68 करोड़ पीपल जो है वो हमारे पास वो हमारे डिसेबल्ड फ्रेंड्स हैं. ओके, और हमारे पास प्रोफेशनल्स कितने हैं? कौन रखता है इनका लेखा जोखा? जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं थोड़ी रफ पिक्चर आपको दे रही हूँ. आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट पिक्चर. ओके, 2011 के बाद अभी कोई सेंसस हुआ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो प्रोफेशनल रजिस्टर्ड है इन ऑल कैटेगरीज, वो आई थिंक मैक्सिमम 1.5 लाख. सो कैन यू सी द गैप? सो अगर हम स्पेशल स्कूल की बात करते हैं, जैसे हम पहले कहते थे कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, वी हैव टू हैव give them special education and segregate them in special schools and all. That's how special education came into existence. अगर हम वो करने लगे तो क्या हमारे पास उतने स्कूल हम खोल पाएंगे? और अगर स्कूल खोल भी दे तो क्या हमारे पास उतने स्पेशल एजुकेटर्स और प्रोफेशनल्स हैं क्या? डिसेबिलिटी प्रोफेशनल्स हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट एट दिस स्टेज. जबकि हम इतने सालों से, हाउ मेनी डिकेड्स नाउ, 1968 में ये पॉलिसी बनी है. ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से बनी थी, but we meant the same thing, Anyways, so अभी भी हम बहुत बड़ा गैप है. So inclusive education जो है is the only solution कि हम existing infrastructure को यूज कर सकते हैं, because हमारे schools तो सब जगह है, everywhere. दूर दरार की जगह पे भी हैं जहाँ पे हमारे बच्चे जो है अप्रोच नहीं कर पाते, जो हमारे डिसेबल्ड फ्रेंड्स हैं वो हमारे सर्विसेज को अप्रोच नहीं कर पाते, बिकॉज देयर आर नो सर्विसेज अवेलेबल. बट रेगुलर स्कूल्स आर एवरीवेयर. So if we have inclusive education system, obviously everybody can reach education. So least cost solution, like we will have to spend very less. And सबसे बड़ी बात, from a early age, right from the beginning, our regular children will start accepting them.
उनको ये लगेगा ही नहीं कि ये एड ऑन है, ये जो मॉकरी और ये जो उनका रेडिक्यूल और ये जो उनका मजाक, हंसी मजाक, वो सब कभी नहीं होगा, बिकॉज राइट फ्रॉम द डे वन दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि शुरू से वो देख रहे हैं ना, तो दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्ट भी शुरू से ही हो रही है. सो मेक्स फैमिली ऑफ द डिसेबल्ड मोर मोबाइल, क्योंकि अब सब जगह भी उनके पास ये सर्विस अवेलेबल है, सो दे कैन ऑलवेज गो. Localized model of special education can be, implemented. So that's the advantage of inclusive education and we all understand it. पर फिर भी कई लोग बोलते हैं कि no, they are all very good. अभी भी, कि our children can benefit more. I mean, there are all types of people, different people. Proponents of full inclusion say different thing. Proponent of partial inclusion say different thing. Proponent of special school say different thing. पर सबसे मोटी मोटी बात ये है कि हमें ये पता है कि अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन प्रॉपर तरीके से कर दें, इफ इट कैन बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल, आई थिंक ऑल द कंप्लेंट्स विल बी आंसर्ड, राइट. नाउ जैसे मैं अभी बता रही थी कि पॉलिसीज तो हैं हमारे पास, कि वी ऑल बिलीव कि all these children, because human beings, our disabled friends are first human beings and then disabled. They are children with disability. They are persons with disability rather than disabled children or disabled people. So उनका भी वही राइट है जो और बच्चों का है. तो एज आई टोल्ड यू, 1986 में भी इसका जिक्र था, तब से इसका जिक्र हो रहा है और ये पॉलिसी है MHRD की, और उसके बेस पे IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन की ये पॉलिसी निकली. उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट लिया NCERT ने जिसका नाम था पाइट. मैं आपको ये सब ये बता रही हूँ कि इसके पीछे कितनी बड़ी हिस्ट्री है. जो हम आज बात कर रहे हैं, ये हम कब से बात कर रहे हैं और कितना इवॉल्व हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, सो आपको अगर ये पॉलिसीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ वी आर इवॉल्विंग एवरी डे. Every day our thinking is changing. Advancement in the country is happening. Advancement in the medical field, in our methods of teaching and ICT and so many things, and so is in the concept. So ये प्रोजेक्ट में ये देखा गया कि ऑन द प्रैक्टिकल टर्म देखा गया कि जब हम ये IED स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लाइक व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुए, और वो सब हमने देखा और उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास पूरी है. एंड देन एक प्लान ऑफ एक्शन बना 1992 पे जो चलता रहा. मीनवाइल हमारी अपनी नेशनल पॉलिसी तो है ही है, इंटरनेशनल पॉलिसीज भी बनती रही, बिकॉज ऑल ओवर द ग्लोब it was agreed that it is everyone's right to be educated with their own peers. Why should they be segregated? Why should they be marginalized? तो सालमान का स्टेटमेंट 1994 में जो इंडिया ने भी साइन करी थी, उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन का जिक्र हुआ था. और फिर उसके बेस पे हमारा PWD एक एक्ट बना 1995 में. बट आपको सबको मालूम है कि वो एक्ट सबको लगा कि इट वाज मोर ऑफ अ स्टेटमेंट एंड नॉट बेसिकली गिविंग I mean, it had given all the rights for the people with disabilities कि ये होना चाहिए, पर अगर कोई नहीं कर रहा वो सब तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका कुछ उसमें खास जिक्र नहीं था. एंड द 7 जो कंडीशन उसमें कंडीशन जो इंक्लूड हुई थी वो थी ये वाली: ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी, हियरिंग इम्पेयर, लोकोमोटर, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस. तो 7 कंडीशन से लेकर, so under this act it becomes mandatory to provide free education to children with disability in an appropriate environment under the age of 18 years. तो ये कंपलसरी हो गया था, मैंडेटरी हो गया था कि सब बच्चे स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं. So nobody can deny admission to these children. उसके बाद क्या हुआ बीच में, सर, because we were all trying all ways to reach education to everybody. एजुकेशन हमारी सर्व शिक्षा SS से चल ही रहा था, और SS से के अंडर हमने सोचा व्हाई नॉट इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ डिसेबिलिटी आल्सो. सो इन 2002 NCC ensures that every child with special needs, irrespective of the kind, category and degree of disability,
is provided meaningful and quality education. जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि एक तो सबसे पहले कि दे शुड बी देयर एनरोलमेंट, सेकंड दे शुड बी गिवन क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंग देयर बाय द एजुकेशन as per their level and as per their requirement. So SSA had adopted a zero policy, a zero reject policy, कि किसी को भी हम reject नहीं कर सकते हैं. Nobody can be denied admission to school. So this means no child having special needs should be deprived of the right to education and taught in an environment which is best suited to his learning needs. These include school readiness program, और यहाँ से एक school readiness program बना जो कि बहुत ही important है, तो कि हमें ये जाना गया कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो he is not yet ready for the formal reading, writing and arithmetic. तो उससे क्या हो रहा था, वो पीछे जा रहा था. So we decided that why not have a readiness program for these children before they enter school, so that they are ready, they have got all the prerequisites which are there, which are mastered by the children before they get entry into the formal school. फिर ये मैंने आपको in the order of मतलब पहले के बाद के ऑर्डर में मैंने आपको बताया, तो इसलिए बीच में कई इंटरनेशनल लॉज आ रहे हैं, बीच में कई नेशनल पॉलिसीज आ रही है, बट आई हैव इन द लाइक इन हियरार्की आई हैव पुट ऑल दिस थिंग. विवाह को मिलेनियम फ्रेमवर्क आया, उसने भी इंक्लूसिव एजुकेशन को फोकस करा और वी साइन दिस. देन नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. व्हाई आई एम शोइंग ऑल दिस थिंग, I would request everyone, I've heard there are around 1,500 audience who are seeing this program. All these things we must know what has happened during these, policies and these conventions and all these laws we have made, and what was the critically analyze all these things. What was lacking and what made us to, reframe those policies. So उसके बाद जो एक लीगल डॉक्यूमेंट आया एंड जो एक लीगल बाइंडिंग हमारे पॉलिसी आई वो है UNCRPD, which was Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 2006 में आया था, 2007 we accepted, implemented it. So under this, it aims to promote, protect and ensure full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom by all persons with disability, and to promote respect for their inherent dignity. So it is talking about the rights now. So it's a legal binding for all of us that it is their right to get education, and if we don't provide, we are in for punishment. So this was the first time the legal binding for all of us. So इसके बीच में एक रमसा, that's what I'm saying. This scheme was, everyone is working parallelly. Now, Ministry of Human Resources and Development, who takes care of education in our country, they were running this scheme, They run a scheme, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा जिसको की कहते हैं, 2009 में लॉन्च हुई थी with the objective to enhance access to secondary education and to improve its quality. So अभी तक हमारे पास जो IED की स्कीम थी वो 8th तक थी, not at the secondary, middle level तक थी. So then they came out with this scheme, they education for the disabled at the senior secondary stage also. So IEDSS came into existence, integrated education at senior secondary level. कि अगर आप 8th तक कर रहे हो तो why not 9th, 10th, 11th and 12th also? What will the child do after 8th class? Where will he go? And then obviously he's not able to do CBSE ka syllabus. So we should have a scheme under which all of these people should fall in. So I'll go little rapidly through all these things. So centrally sponsored scheme, जो मैंने अभी बताया आपको, education of the disabled at senior secondary stage, was launched in 2009 and 10 by replacing earlier scheme of integrated education for children, because that was only till middle level, IEDC 1992. So IED was launched, but now it is under RMSC, Ramsa only, and Ramsa scheme. Then Right to Education Act came into existence, because everybody said
कि it mandates free and compulsory education to all. ये उनका right भी है from 6 to 14 years. So all these things together, you know, they are now loudly saying, yes, inclusive education is the only choice and is the only answer for education for all. Okay. So इसमें क्या amendment of RT Act August 2012 में भी हो गया. I mean, I don't want to get into the detail. If someone is interested, just, you know, go to the net and you can get all detailed information about all these schemes, all these acts. So on the basis of UNCRPD, we are supposed to implement UNCRPD, right? So in the process of implementing UNCRPD, we had to replace the earlier act of PWD Act, जो 1995 में था, which has been now replaced by the latest act. We call it the Right of the Person with Disability Act. Okay, RPWD Act 2016. So in this act now, these are the main points of this salient features. The Act identifies disability as a dynamic concept. The number of categories of disability have increased from 7 to 21. The Act recognizes disability rights to be a matter of human right. It makes provision for inclusive and free education for every child with disability between the ages from 6 to 18, not 6 to 16. The Chapter 3 of the Act makes provision for inclusive education of children and young persons with disability in regular schools. So it's talking about inclusive education. And the salient features are admission to all, making building campus and various facilities accessible. Now, they are not talking about in detail. We are not only just talking about making your building accessible. You know, we were talking for a long time about infrastructure. Now we have started talking about what is happening in the classroom. So we started focusing on what is happening in the classroom when these children are there. Our infrastructure is accessible. Is the learning accessible? Is the teaching accessible? So that was the main focus here now. So providing reasonable accommodation according to individual requirement. Why? Our aim is to make children learn what is supposed to learn. What is required for him to learn? What is required for him to learn? For every child, what is required to learn? All those skills which will make him independent. ठीक है ना? हमारा मेन मकसद क्या है? All children, all, regular कह लो, disabled कह लो, all children. What is our main aim? Our main aim is to make our children independent. In basically, we can shortlist 3 main categories. Personal adequacy, to take care of the personal needs. Social adequacy, to take care of the social needs. Third is what? Economical adequacy, to make independent economically. तो अगर हमारे हर बच्चे का ये एम है, कुछ बच्चे इनमें से दो अचीव कर लेते हैं, कुछ बच्चे 1.5 अचीव कर लेते हैं. So, but this is what we want all children to achieve to whatever extent possible, right? So whatever accommodation a child needs, we say those should be given to those children so that he learns that particular skill or an activity to make himself independent in the areas I've just said. Okay. So कहने का मतलब अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो पता है वो नहीं कर पाएगा. आप उसको कुछ भी करवा लो, वो नहीं कर पाएगा. Because if your limb is missing, how can you just eat with your hand? आपका हैंड अगर काम ही नहीं कर रहा है तो कैसे खाओगे? So now it is my responsibility to give you an accommodation which will make you eat your food, right? So तो कहने का मतलब किसी भी तरह से आप उसको वो काम कराना है, चाहे आप उसको अकोमोडेट करो, चाहे आप उसको सपोर्ट करो, चाहे आप उसको कोई आईसीटी दो, चाहे आप उसको कुछ भी दो, किसी भी तरह की अकोमोडेशन देके, किसी भी तरह की सपोर्ट देके आपको बच्चे को काम कराना है जो उसको करना चाहिए उसकी एज के हिसाब से. So providing necessary support, I've already talked about that. So to basically to maximize his academic and social development. So I've just told you that under RPWD Act, though it is not part of this, but I'm just telling you how Herculean this task is of inclusion. You know, अगर हम ये इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, अगर ये सारी disabilities भी अगर आपके पास
कोई भी आता है आपके पास, यू कैन नॉट से नो टू देम. पर अभी तो हमने इनके ऊपर बात भी नहीं करने पाए. अभी तो हम आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, यू नो, एंड इट्स real personally my experience. We are still sometimes struggling, battling with, you know, some condition like ASD, and some conditions like, you know, deaf, blind, you know, multiple disability. And when all these conditions will also be there. So far, you know, we don't even know what are the characteristics of children with behavioral characteristics, I'm telling you, and the what impact it will have on their learning, if the child is having blood disorder, if the child is having thalassemia and all those things. So we still have to work a lot on these things. But I'm just telling you that these are the disabilities. If I had put in 21, you would have just gone, you know, oh my God, who will remember all this disability? So it's easier to remember this way. These are the ones under physical disability. These are the ones under visual impairment. These are the ones under the speech and language. These are the ones under hearing impaired, intellectual disability, and mental behavior neurological disorder and multiple disabilities. So in all, there are 25 disabilities. So जितनी भी मैंने अभी आपको पॉलिसीज बताई हैं, इतनी सारी पॉलिसीज हैं. सो देयर इज नो डर्थ ऑफ पॉलिसीज कि हम कहें कि यार ये तो पहले जैसे होता था, ये तो मेरी मर्जी है, यू नो, इट्स माय विल, और इट्स माय विश, और इट्स माय you know, what do I say, whether I want to include children with disability in my school or not. But no longer the same. It's a legal binding on all of us. There is a law now, and if we can't say no to everybody. And all these policies have given a mandate of inclusive education. So now it has become an official policy, whether we like it or not like it. So now the question is whether we should have inclusive education or not. The question is now, how can we make inclusive a big success, where each and every child who's coming to the school is learning what he's supposed to learn as per his age and requirement. That is the main. So now, in order to make, so the main question is, I tried to kind of, you know, made my presentation very comprehensive. What is the concept and what we need to do? See, so basically what we are talking about the changes at the system level. Integration or inclusion में फर्क यही है. When we were talking about integration, we were talking about, you know, making the child fit into the system, right? हमारे पास एक बच्चा आया. I mean, just to give you कि थोड़ा सा मैं आपको फर्क बता दूं, so that you know what we are talking about inclusion. एक छोटी सी, you know, I'll take a small kind of story. A story in the sense, say for example, I want to invite people for the Christmas party. Christmas is just 3 days away. So I want to invite people for Christmas party. And I'm very excited about it. And, you know, I've called everyone in the family. So in the family, there are old people above 50. In the family, there are teenagers. In the family, there are middle-aged people. In the family, there are small children and everybody. But I'm so excited, you know, ठंड है, सब कुछ है, ये है. So let's make chola bhatura, and also, you know, like I'm making, according to myself, a wonderful menu I'm planning, and I'm cooking, and I'm waiting for everyone to come. And, you know, I've, in the best wisdom of myself, I've displayed the whole table with, you know, beautiful menu on the table. And my guests poured in, and then they started eating, and I find one uncle says, "Oh, ma'am, Usha ji, I don't eat this because I'm diabetic." So, because there was a sweet dish, and the other person come to me, "Usha ji, I can't have oil. This is fried. Can I have a chapati?" I said, "No problem. I'll get chapati made." And I made arrangement to make chapatis, or I go myself to the kitchen to make chapati. And then somebody says, you know, because I put, because it's hot, I put tea, and then people are saying, "I don't like tea, I like coffee." And somebody said, "No, I would like to have nimbu pani." I said, "Oh, I thought nobody will have nimbu pani because it's so cold." "Well, no, ma'am, I take nimbu pani only. I don't take tea or coffee." So I said, "Okay, no problem, I'll just make." So what will be the outcome of my dinner? Can you imagine? What will you say? Huh?
I think I'm turning my this thing, my a dinner into a big disaster. You know, I'm having demands from different people. I'm trying to, trying to overcome my own this thing, and then trying to make things, trying to fit them into what all I have. So, what will be the outcome? Obviously, not what I expected. I really wanted to have good time. Somebody wants to say something? Okay. So, so, so in the school, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक बच्चा आया, ओह चलो इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं, अरे इसका ये लेवल है, इसको ये नहीं, फिर इसको ऐसा करा लेते हैं. So we are trying to fit him in the existing system. बट इंक्लूजन में हम ब्रॉडर लेवल की बात कर रहे हैं. हम ये सब चीजें जो हम अभी बात करने वाले हैं कि ये सिस्टम लेवल पे ये चेंजेस लाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से. ऑल दिस आई हैव लर्न फ्रॉम यू ऑल in my experience of teaching, in my experience of working with children at various levels, working in for inclusion in various setups, in government schools, in private schools, in my own segregated situations. I have found out whatever I'm going to tell you, these are my own observations. So जब तक मेरे सिस्टम में ये सब चीजें I have not put them in order, I think I shouldn't even try to bring my children in the system. तभी जब I mean again sharing my own experience, जब हमें ये पता चल गया कि Delhi government has done so well, मतलब government has done so well, हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर आ जाएगा, जो हमेशा से कहते रहते थे स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए. So I was very happy. So but then we decided, but स्पेशल एजुकेटर को करना क्या है ये तो हमें अभी तक मालूम ही नहीं है, and with the result स्पेशल एजुकेटर आ गया पर उसको ये नहीं पता था करना क्या है. So what I'm saying, making systemic changes beforehand. So making system ready beforehand, जैसे अगर मैंने ये अपना डिनर अरेंज करना था, क्रिसमस का डिनर, I have to think, menu for the old people, menu for everybody, for teenager, for children, for everybody, and maybe include one dish for everybody, so that I could enjoy with everyone and eat myself as well, rather than listening to their requirement and trying to fulfill there and then, and not spending any time with them. And what was you think my guest would have gone happy? Definitely not. So मैंने मतलब बहुत crude example आपको देके बताया है, but this is what it is. So ingredients, methodology, ये सब इसको सोचना है, इसको रिव्यू करो, हम बात क्या कर रहे हैं, जो हम बात करने चाह रहे हैं, क्या हमारे सिस्टम में ये सब कुछ है. और मे बी जो मैं बातें बता रही हूँ उसके बावजूद भी आप कहेंगे मैम नो दैट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट. सो आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्सेज. But you have understood, you have imagined, if you have not worked in inclusive education, but I think you are with me. You are imagining what I'm talking. It's a class where all these children are there with various disabilities. So it's a diverse class, and this is one teacher here who probably has some knowledge in special education, maybe in ID or BI, or maybe a general teacher who has just done B.Ed or M.Ed or general teacher. So the teacher dealing with this group of children we are talking about. So I'm reminding everyone what we are talking about. So how we can make an inclusion happen. Main चीज तो ये है. अब पॉलिसीज बहुत है, अब कोई पॉलिसी हमें नहीं चाहिए, हमको सब पता है, और कोई भी गलती करेगा, कुछ भी पता है, हमें पता है, हम उसकी शिकायत हो सकती है, कोई मना नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता. अब जरूरत क्या है कि हमारा जहां बच्चा आ रहा है उसको देखना है. तो बेसिकली बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, आप सब बात करते हो, इसके बारे में बहुत बातें हो रखी हैं. बैरियर फ्री कमिश्नर डिसेबिलिटी के वहां पे अगर आप देखो, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट के पास बहुत काम हुआ है, और उनकी बुकलेट्स भी निकली हुई हैं, कि हर डिसेबिलिटी के लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए. सो मेकिंग द इन्वायरमेंट एक्सेसिबल. सो ये सब बहुत लोगों को ये मालूम है कि हमारा, और ये अभी सुगम्य भारत अभियान आपने देखा होगा 2017 में ये इन्होंने लॉन्च करी है, एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, मतलब यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल. तो क्या आप इसको गूगल करके देख सकते हैं व्हाट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट.
सो बैरियर फिर के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल के लिए आना चाहिए, आप सब कहेंगे मैम रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, क्लासरूम लाइब्रेरी सारा कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। अगर वो सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे है तो वो सब आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास कोई भी इस कैटेगरी का बच्चा आ रहा है तो क्या वो इन जगहों पे पहुंच सकता है, आपको ये सोचना है। हैंड रेल्स लगनी चाहिए ताकि उसको कहीं भी सपोर्ट की जरूरत हो, टॉयलेट्स जो है उसके हिसाब से बनने होने चाहिए, लो टॉयलेट्स एंड ऑल दैट, एप्रोप्रिएट विजुअल साइनेजेस होनी चाहिए, लूप इंडक्शन सिस्टम होना चाहिए फॉर हियरिंग हैंडीकैप ताकि उसको पता चले कि क्या आप कहाँ पे पहुंच रहा है। स्कूल एंट्रेंस शुड बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये नहीं कि जनरली स्कूलों में हम जाते हैं पता ही नहीं चलता ये साइड डोर है कि एंट्रेंस है। साइड डोर शुड बी प्रॉपरली विजिबल सो दैट एवरीबडी कैन सी दिस इज द एंट्रेंस। रिसोर्स रूम होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और रिसोर्स रूम ही नहीं है तो इंक्लूजन कहाँ से होएगा, राइट। रिसोर्स रूम का वर्ड ही हमारा जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात शुरू हुई थी तब हुई थी, पर रिसोर्स रूम तो इवन स्पेशल स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अ चाइल्ड विच इन द क्लासरूम आर नॉट बीन एबल टू टेकन not been able to take care, the teacher is not able to take care. Tactile flooring होनी चाहिए विजुअली हैंडीकैप के लिए। सो ये इसमें एक एक चीज है जो हमको ध्यान में करनी है, राइट। के लिए ऑल की बात कर रहे हैं, ओके। सो आपने बहुत काम हुआ है, बहुत सारे स्कूल changes आए हैं, but still you can see for yourself whether all the schools are accessible or not. Okay, so let us assume the schools are accessible. The child can come to the school, to the classroom where he or she is enrolled or studying. Now the next is in the classroom. Now how to make teaching learning accessible? How can I make teaching learning accessible? राइट। सो सिर्फ आना ही तो नहीं है ना, जो कि कई बार हो रहा था कि बच्चे आ रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, बट आई गॉट सो मेनी टाइम्स आई गॉट अ रिपोर्ट सेइंग, एंड गेटिंग अ फीडबैक ऑलवेज हेल्प अस आउट बिकॉज वी कैन इम्प्रूव अपॉन। सो व्हेन पीपल से कि बच्चे को फायदा नहीं हो रहा है, जाता है आ जाता है, यूनिफॉर्म मिल जाती है एंड ऑल दैट, सो यूज्ड टू फील कि so where is the lacuna, where is the problem? And then we came to know, the teacher child interaction is not happening the way it should happen. So the multiple strategies to present content, मतलब कहने का मतलब जो है, क्योंकि हमारे पास डाइवर्स चिल्ड्रन है, एक कंटेंट को एक तरह से अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो ऑल ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू लर्न। जैसे अब मैं बोल रही हूँ और आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, और अगर मेरे सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट। सो हैव आई मेड अरेंजमेंट? अगर मैं कहूँ मेरा ये डिसेबिलिटी का वेबिनार हो रहा है और विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन भी वहां पे प्रेजेंट है, तो दे आर नॉट एबल टू make any sense out of it unless I've given the whole presentation in Braille, or I've given them a software where they can see this text on their computer. So the content has to be present. We have to use various case studies, role play, field trips, hands-on activity, guest speakers. तो हमें बहुत सारी तरह से कंटेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है rather than just one single method. और अब सब अपने अपने कामों में बहुत इम्प्रूव मतलब देख रहे हैं कि व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क। साउथ में इतना अच्छा काम हुआ है, अपने अपने उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं और उसमें देखा है कि दिस पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे केस स्टडीज हैव वर्कड वंडरफुली, सो सम पीपल से नो दिस मेथड वर्क्स वेरी नाइसली मैम। सो वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी शुड काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, learn from everyone, rather than making your own learning from your own experience all the time. Teach using variety of learning styles, audio and visual mediums, online resource material, PPTs, e-book, ये वही different ways हो गए ताकि जितने भी learners हैं, जितने भी तरह के learners हैं आपकी क्लास में, we will come to that in a short time, they can make use of it. और असेसमेंट भी फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ये नहीं कि आपका सबसे वर्बल असेसमेंट ही होनी चाहिए उसका लेवल जानने के लिए या उसका इवैल्यूएशन। असेसमेंट दो तरह की होती है, पहले जब आता है बच्चा बेसलाइन असेसमेंट, एंड देन जब दूसरे जो आफ्टर द प्रोग्राम इज बीन गिवन प्रोग्रेस के बाद असेसमेंट, व्हाट वी कॉल इवैल्यूएशन। सो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सो दैट यू गेट द करेक्ट पिक्चर। यूज टेक्नोलॉजी टू कम्बैट लिमिटेशन।
This is what is, is a big boon for all of us. Big boon, especially we have realized now when we are using this online media. We always used to think, हमारे बच्चे, when I say हमारे बच्चे, I'm talking about children having autism, children having ID, वो कहाँ से यूज करेंगे? उनको तो फेस टू फेस ही पढ़ाना इतना मुश्किल हो जाता है, तो ऑनलाइन पढ़ाना कितना मुश्किल होगा? बट we all only know when we try it out. Without putting it into practice, पहले ही अगर हमारा negative attitude होता है, तो we don't even try and find out whether it is true or not. And to our surprise, it has worked wonderfully well. There are pros and cons. I'm not saying it can never replace face to face for our children, but कुछ ऐसे फायदे हुए हैं जो हमको face to face नहीं हो रहा था. So for example, we can involve parents. Now parents are with us, they are at par with us. Sometimes I feel now they know more than us. They have learned all special education with us, because at the other end they are with the children. So, and learning from the teacher, through the teacher, and then second look parent, and then any time later, because now the parent has that material with her, is such a boon for all of us. So there are advantages also. So next, which is the most important, I always say to myself and to all the people who are handling these children, all the people who are handling inclusive classes, all the teachers, all the special educators, ask these questions, like, can I handle this class where all these children are there? So if the answer to that question is yes, fine, you can handle inclusion. If the answer to that question is no, then obviously you have to build yourself. So capacity building of our teachers, professionally building, जैसे ये faculty development program हो रहा है, ये एक inclusion में ही faculty development program है. Inclusion is such a vast thing. एक एक एरिया कोई अगर आप लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग से लेंगे, करिकुलम को अलग से लेंगे, अब हम इस पे बातें कर रहे हैं ना, तो आपको पता चलेगा how big this task is. How to identify children with special needs? Do I have that skill with me? Can I identify all children with special needs? Ask yourself. If I ask myself, yes, with God's grace, I've spent so many years, and if I don't know this at this stage, then shame on me. So I have learned, because the time has come when a person should be trained in all disabilities. At least it should be able to deal with all disability at the lower level, at the junior, what I'm saying, grassroots level. बाद में कभी पड़ती है तो we can always approach the professionals. So ask this. So I have told you, I have got a checklist also. I've got everything. Everything is available with us. Only thing, we have to use it and get ourselves mastered in that. So we should know how to identify all these children with special needs. We have checklist with us. I will show it to you if time permits after the end of the class, or I'll give you references where to get it. How to do assessment. Identification is not enough. I know this child is ID. I know this child is ASD. But now the question is, what do I teach him? Now $1 million question, जिसमें हमेशा हमारी बहुत controversies होती है, बहुत conflict होता है, बहुत tug of war होती है. Some people will say, obviously it's inclusion, and they will use the same textbooks. So I say, same textbooks? तो फिर वो पहली स्कूल में क्यों नहीं पढ़े? Why were they in special school? And why are you calling them children with special needs? So why this the whole, this whole, drama is all about, if they could do this, our same textbooks. So अभी भी सब लोग वही कहते हैं. If they could read the same textbooks, I would have been very happy. But yet they don't. Their characteristics have not changed when they have joined regular schools. Or have they changed? Or their behavioral characteristics have changed? No. Only thing is, now they are with their peers. So they are also will be able to develop their social skill, which was lacking there. They have their role models there, from whom they will learn so many things. And they will be in the natural, in the environment,
regular environment with their own buddies, with their own peer groups, which is their right. So using readiness skills program in reading, writing and arithmetic, जैसा मैंने अभी कहा कि अगर हमारा बच्चा रेगुलर स्कूल में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ने जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज एज, वी हैव टू सी ना कि उसके पास रीडिंग रेडीनेस स्किल्स हैं क्या, राइटिंग रेडीनेस स्किल्स हैं क्या, अरिथमेटिक रेडीनेस स्किल्स हैं क्या कि नहीं है. और अगर नहीं है तो हमें उनको सिखानी पड़ेगी. Because we assume for regular children they learn all these skills spontaneously. सबको मालूम है हमारे बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं अपने आप ही उनको विजुअल डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, अपने आप ही उनको ABCD भी आ जाती है, अपने आप मतलब थोड़े बहुत वो करने से, स्टिमुलस देने से, अपने भाई बहन से सीख लिया, अपने टीवी से सीख लिया, खेलते कूदते सीख लिया, रंग सीख लिए, ये सब सीख लिए. हमारे बच्चे दे डोंट लर्न इन देयर ओन, सो वी हैव टू स्ट्रक्चर एवरीथिंग. सो रेडीनेस स्किल्स का ये बात में आया था जब हमने ये एसएसए की हमने एसएसए के बच्चों के साथ काम करना, स्कीम के साथ काम करना शुरू किया था. सो उसको ध्यान में रखते हुए एनएमएच ने, जो कि अब निपिड है, हमने एक बुक भी बनाई है. आई शो यू लेटर व्हेन आई पुट माय स्क्रीन ऑफ. आई डोंट थिंक यू कैन सी राइट नाउ, बट वी हैव कम आउट विद अ बुक कॉल्ड स्कूल रेडीनेस skills for special children. So that will be very handy for you, but that talks about only those 4 conditions which were there earlier in the first law. So हमको वो जो बाकी conditions है उनके ऊपर भी काम करना है. I'm just giving you the inclusive education की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना काम हो चुका है, कितना काम हमें बचना है, तो मैं आपको वो बैलेंस शीट भी आपकी बनवा रही हूँ साथ साथ. So आपके पास है क्या, आपको पता है कि रेडीनेस स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, या आपको मालूम है कि होर प्रोग्राम क्या होता है, विजुअली हैंडीकैप का क्या होगा, हियरिंग हैंडीकैप का क्या होगा, फिजिकली हैंडीकैप का क्या होगा. अगर नहीं पता तो जानो, क्योंकि अगर वो आपके पास बच्चा आ गया और उसके पास ये नहीं होंगी और वो दूसरी क्लास में है तो वो करिकुलम नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट येट रेडी, हिज प्री रिक्विजिट्स आर नॉट प्रेजेंट. अगर मेरा हाथ, मेरा पिंसर ग्रास्प ही नहीं है तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट मी टू होल्ड सम एनीथिंग, राइट. तो मैं सबसे पहले पिंसर ग्रास्प सिखाऊंगी ना. सो वही बात यहाँ पर है. देन planning curriculum, again you can take one class only on curriculum. Okay, that's what I'm saying, that each area you can take in detail, that how do I go about this. I'm giving you the overall, कहते हैं ना bird's eye view कह रही हूँ, but all this is just the tip of the iceberg. अंदर जाओगे तो देखो कि आपको क्या क्या हमें करना है. अब करिकुलम में वुड यू ऑल एग्री विद मी दैट जो करिकुलम स्कूलों में है हमारे बच्चे कर सकते हैं वो, देयर इज नो क्वेश्चन, द आंसर यस और नो. कुछ बच्चे करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे, पर क्या हमारा आंसर ये है कि कुछ जो कर रहे हैं उनको करा दो, जो बाकी हैं उनको नहीं कराओ? क्या हमारा गोल ये है इंक्लूजन में? हमारा गोल क्या है? ऑल. तो हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं कर पाएंगे जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है. तो कुछ बच्चे तो सेम करिकुलम कर पाएंगे विद गिविंग लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट, विद गिविंग लिटिल बिट ऑफ टेक्नोलॉजी, दे विल बी एबल टू फॉलो द सेम करिकुलम. पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बिकॉज वी हैव हर कैटेगरी के, वी हैव माइल्ड मॉडरेट, हर कैटेगरी में भी माइल्ड मॉडरेट एंड सिवियर कैटेगरी. एंड इमेजिन, माइंड यू, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल, राइट. सो ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो करिकुलम नहीं कर पाएंगे, और हमें जो मॉडरेट कैटेगरी है, हमें मॉडिफिकेशंस कुछ करिकुलम में चाहिए. अब ये जो मॉडिफिकेशंस है, मैं एक मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, तान्या मैम अपनी मॉडिफिकेशन कर रही है, प्रतिभा मैम अपनी मॉडिफिकेशन कर रही है, कुसुम मैम अपनी मॉडिफिकेशन कर रही है. सो एंड द चाइल्ड विल गो टू द अदर क्लास, नेक्स्ट क्लास, and that teacher will do. So there is nothing like structured thing for them. Standardized तो कर ही नहीं सकते, but हम कहे there is nothing like structured कि बच्चे ने इतना कर लिया, इतना नहीं करा, right? So think about this. So modification करनी पड़ेगी to make it either very easy or make it less, whichever is the case. और कुछ बच्चों के साथ वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं कर पाएंगे हमारे बच्चे जैसे. So that's the advantage. If somebody else from visual impairment or HI would be talking, वो सिर्फ कह देंगे बस मॉडिफिकेशन कर लो, एडाप्टेशन कर लो, काम हो गया. हम जैसे लोग जो आईडी के साथ काम कर रहे हैं, जो ASD के साथ काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं करेंगे. जिसको अभी
ABCD भी नहीं पता, 2-letter word joining नहीं पता, how would they read the book? He's 7 years old. He should be in 2nd standard. So what is he doing in special school? All that as per his level जो भी वो कर रहा है वो मैं इसको यहाँ पे उसके रेगुलर स्कूल में उसको अवेलेबल कराना है, एक्सेसिबल कराना है. That's my duty as a teacher in inclusive classroom. Yes or no? Yeah. So मुझे फंक्शनल करिकुलम भी वहां पे बनाना है, राइट? अब कुछ बच्चे वो भी नहीं करेंगे. आपने देखा होगा why NIOS came into existence. इसीलिए ना कि सारे बच्चे ये करिकुलम नहीं कर पा रहे थे. So why don't you take a cue from there? तो ये बच्चे अब हमारे रेगुलर स्कूल में हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी कह रही है. So जैसे आपने NIOS बनाया ऑल्टरनेट करिकुलम, आप अपने बच्चों के लिए भी एक ऑल्टरनेट करिकुलम बनाने की जरूरत है कि नहीं? I'm just throwing these questions to you, you know. You may agree with me, you may not agree with me, or you may have some suggestions or queries or comments, but we are still, you know, like finding answers. So we will have all this curriculum, and then हम कहते कि ठीक है, जो कुछ भी है ये है, मेरे ये वाले बच्चे सिर्फ इतना तो करेंगे ही करेंगे. मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग जो काम शुरू भी करा है एनसीईआरटी ने शुरू करा. पहले भी मिनिमम लेवल्स बने थे, पर अब हम अपने बच्चों को ध्यान में रख के हर सब्जेक्ट के, यू नो, हर क्लास के, फर्स्ट क्लास 4 सब्जेक्ट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इसके जो मिनिमम लेवल्स जो हम हमारे बच्चे करेंगे उतना लिस्ट होकर आ जाए. तो डोंट यू थिंक वी विल हैव समथिंग there for everyone to follow? So अगर हम सिर्फ मिनिमम लेवल्स की बात करें, मेरे हिसाब से अगर वो बन जाए तो nobody will have this problem कि मैं इस बच्चे को क्या पढ़ाऊं मैम, और मैं इस बच्चे को मैं तो ये पढ़ा रही हूँ, वो ये पढ़ा रही है. Is it right or is it wrong? Some people still ask me who are in, you know, our own teachers who are working in inclusive schools, you know, in government schools, and they come and ask me, ma'am, am I doing right or wrong? So this question will not be there if we have something structured like that, you know. So these are again, so curriculum we have to plan, और ये plan करके हमारे पास एक guides होनी चाहिए, you know, like what, so that we have the same, I would say, structured, you know, guidelines. Okay. अब टीचिंग मेथोडोलॉजी. अब टीचिंग मेथोडोलॉजी भी एक मेथोडोलॉजी से तो काम नहीं चलेगा. टीचर ने क्लास में बैठा, जो कि बहुत चेंज हो गया है अब, और हमारे टाइम की टीचिंग में टीचर बोल रही है, हम सब उसके पीछे पीछे बोल रहे हैं, पढ़ाई हो गई. इट हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली ओवरऑल. हमें पूरा ओवरऑल हो गया है हमारा सिस्टम. मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब इतने अच्छे मेथड्स ऑफ टीचिंग आ गए हैं इवन इन गवर्नमेंट स्कूल, you know, activity based learning and demonstration, illustrations and everything. So wo kyun aaye hain? Because of our changes in the evolvement and in the changes in our thinking, that how these folks who are always behind will learn. So aapne UDL ka suna hoga, universal design for learning. What does it mean? Universal design ke sirf 3 principles hai: multiple means of representation, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन. आप मल्टीपल मीन्स से रिप्रेजेंट करिए अपने आप, अपने उसको, जिसमें कि मतलब अपनी टीचिंग को ऐसे डिजाइन करिए जो हर इंसान उसको समझ सके. मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चा ऐसे एक्सप्रेस करेगा मल्टीपल वे. वो सिर्फ लिखेगा ही नहीं, सिर्फ बोलेगा ही नहीं, सिर्फ बताएगा ही नहीं, और सिर्फ करके नहीं देगा. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके हिसाब से वो अपनी लर्निंग को एक्सप्रेस कर सकता है. मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, वो सिर्फ एक सुन ही नहीं रहा है, वो बहुत सारी चीज करके एंगेज करके वो उस चीज को सीखेगा जो हम सिखाना चाह रहे हैं. These are the 3 principles. I'll come to that obviously in detail. I can't tell you because of the paucity of time, but I'm telling you, हमारी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए which is universally designed, जिसमें हर बच्चा जो है वो लर्न कर सके. और ये यूडीएल कब बना हो गया? जब करिकुलम करने से पहले कि टीचिंग करते समय. ओके, गिव मी दिस आंसर, थिंक अबाउट दिस आंसर. मीनवाइल आई विल गो टू द सेकंड. तो ये तो हो गया, ये आपने सोचना है कि मैं अपना कंटेंट जो है कैसे प्रेजेंट करूंगी. अब दूसरा ये आ गया डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, राइट, कि इसके 4 जो है एलिमेंट्स हैं, इनको आपने मॉडिफाई करते रहना है. कंटेंट,
कंटेंट में कैसे प्रेजेंट करूंगी इस बच्चे के लिए, और या सबके लिए कैसे करूंगी कि ये वाले बच्चे भी सीख जाए, प्रोसेस क्या होगा, प्रोडक्ट क्या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बच्चे से, इन्वायरमेंट कैसा होगा। सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कब यूज करेंगे आप, एक टीचर कब यूज करेगा, यूडीएल कब यूज करेगा, ऑब्वियसली जब आप करिकुलम प्लान कर रहे हो तब आप इसको ध्यान में रखोगे, और ये कब यूज करोगे आप, जब आप टीचिंग कर रहे हो। यस, एंड दैट्स व्हाट वी से। अब कैसे करोगे, आपको प्रैक्टिकली करना, एग्जांपल दे दे के मैं बता सकती हूँ, यू नो लाइक सिंपल थिंग। मैं अगर लीस्ट एग्जांपल लूँ, आईडी बच्चों से कम लेवल का तो शायद मतलब लीस्ट लेवल ले रही हूँ। मान लो आप सिंपल चीज करा रहे हो, एनी एग्जांपल यू कैन टेक, यू नो anything. I mean, I can take simple color because that's easier to understand. So how would I present the content? Say for example, आपको सबको पता है कि मैं हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, कौन से मेथड से पढ़ाते हैं बच्चों को, बिकॉज टास्क एनालिसिस, राइट, वी एनालाइज द टास्क इनटू स्टेप्स। तो सबसे पहले जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेड सिखाते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड सिखाते हैं, तो हम एक ही बारी में नहीं सिखा सकते हैं। पहले उसको एक चॉइस में सिखाते हैं कि भाई रेड कहाँ है, फिर दो चॉइस में रेड के साथ हरा रख के देन हम भी सिखाते हैं कि लाल कहाँ पे, फिर और ज्यादा और क्या बोलते हैं कलर्स आते रहते हैं, और फिर पूछते हैं वेयर इज द रेड। So gradually we are increasing the difficulty level of the process and the child is responding, right? So my content presentation is different in each step. पहले जब दो का हुआ, अब जो दो कंटेंट जो था मेरा टू चॉइस में मैं उसको करा रही हूँ, दैट्स माय कंटेंट। नाउ टू जो दो चॉइस का कंटेंट है उसको मैं डिफरेंटली प्रेजेंट करूंगी। पहले मैंने उसको सिर्फ टेबल के ऊपर दो कार्ड रख दिए, अगली बार मैं बहुत सारे कार्ड लाल और पीले की बनाऊंगी और बहुत सारे कमरे में रख दिए, और मैं बोलूंगी ओके आई गिव यू 30 seconds and you go get all red colors, I will see how many do you collect. The same content but I've used different presentation. I planned it this way कि मैं इनको अलग अलग तरीके से ऐसे करूंगी। 10 तरीके हैं मेरे पास सेम चीज को, इस कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। 10 तरीके हैं बच्चे को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने सोचा हुआ है। एक बच्चा मुझे उठा के देगा, एक बच्चा मुझे पॉइंट आउट करके देगा, एक बच्चा लाल चीज को पहन के उसके साथ नाचेगा दौड़ेगा बिकॉज इज ए कानास्टिक लर्नर, एक बच्चा लाल बॉल को देख के उससे खेले करेगा क्योंकि उसको खेलना ADHD है, वो भागता दौड़ता ही रहता। You getting my point? And I have changed the environment. People who are more this thing, they are closer to me, creating more problem, will come to that. And the product would be हर बच्चे के लिए, मतलब ये वाला बच्चा मुझे सिर्फ उन्होंने मुझे बताना है कि ये रेड है, वो जैसे मर्जी बताए, नॉट दैट कि उनको मुझे उठा के ही बताना है ये रेड है और मुंह से कह के बताना है कि टमाटर इज अ रेड, विच एवर वे। सो आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट द एंड प्रोडक्ट कि उसको वो आ गया कि नहीं, राइट। सो अगर मैंने ये चीजें अपनी मेथोडोलॉजी में यूज करी, डोंट यू थिंक आई कैन टेक केयर ऑफ ऑल माई चिल्ड्रन? But it's a learning experience for teachers all the time. I'm still learning. So this is the difference. I've just told you, universal design will take into consideration these 4 principles: means of presentation, representation, and engagement. ठीक है? और this differentiated is content, process और इसको product को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ाना है। So the difference between both is that when and how changes are made to address the need the student. Differentiated instruction happens during instruction, whereas UDL happens while you are designing the curriculum. Clear? आपने बहुत सुना होगा UDL is again a new concept and we all have to. मतलब हम ये कह रहे हैं टीचिंग ऐसी बनाओ जो सबके लिए वो हो, राइट। बिल्डिंग ऐसी बनाओ जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है। डिश ऐसी बनाओ जो सब खा सके, राइट, ओके। और फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी में बहुत कुछ आएगा, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, उसको सारी स्पेशल एजुकेशन आनी चाहिए, आईपी बनेंगी इन बच्चों के लिए
लोग कहते हैं अच्छा इंक्लूसिव स्कूल में चला गया तो आईपी की क्या जरूरत है। हमने पीछे एक वेबिनार करा था, यही करा था उसमें कि आईपी का मतलब क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल, उसकी नीड्स फर्क है ना औरों से, तो आईपी विल स्टिल बी देयर बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ ग्रुप, राइट। सो उसके गोल्स वैसे ही चुनेंगे जैसे हम पहले चुनते हैं, कीपिंग इन व्यू वी नीड टू हैव स्मार्ट गोल्स. Smart teachers will have smart goals only. What do I mean by smart? That smart teacher will be very careful that she has kept in mind the goal has very, very specific. She knows what am I teaching. I'm only teaching matching of red color. I'm only teaching reading one sentence. I'm only teaching, identification of the word bandar Hindi mein. Or I'm only teaching, simple addition of single digit. Single digit. I'm only teaching addition of two uh, carryover, 2-digit carryover, right? Carryover addition. So you have to be very, very specific, and you have to teach it in a way that it is measurable. Okay. So say for example, अगर आप कहोगे मेरा बच्चा understand, मेरी बच्चा ना आज he will count till 20. So how would I know whether he has understood or not? Unless he gives me 20 things, right? So gives me, so measurable. So I can see that out of the 7 tries which I gave him to give me 20 things which I taught him, the concept of 20 or the concept of 5 or the concept of 7, अगर उसने मैंने उसको 7 ट्रायल दिया और 7 ट्रायल में से उसने मुझे 5 बारी सही 7 ऑब्जेक्ट दे दिए, तो आई विल से ओ वाव ही हैज अंडरस्टूड बिकॉज आई कैन मेजर इट, राइट. अटेनेबल, हैव रियलिस्टिक गोल्स, राइट. नॉट कि क्योंकि मैं चाहती हूँ, पेरेंट चाहता है हैव my child will learn the whole book because he's supposed to, he's in 3rd standard. So you are not only hurting the child, you are also hampering his growth. Emotionally तो पीछे चला ही जाएगा because he will have this feeling of failure, that obviously his level is not there, but you're forcing and pushing him कि 100 तक सीख ले, and 100 तक सीख भी लेगा तो is that a concept you really want to teach? Is it a realistic goal for him? If he can't even give you 10 objects properly, correctly, it should be result oriented. कहने का मतलब जिसकी वैल्यू है, जिसकी जिंदगी में जरूरत है, वो टाइम बाउंड. ये नहीं कि आप एक से सिखा रहे हो, मैंने सिखाती रहूंगी पूरा साल. No, you have to time yourself. It will be taught in 3 months, it will be taught in 2 months, it will be taught in 1 week, it will be taught in 1 year. So that's when we write big long-term objectives, we write small short-term objectives. Okay. And then you will agree with me, अब जब हम पढ़ाते हैं तो TLM plays a big role. This is not a workshop for TLM, but I could show you. We always depend on our own TLMs, which are tailor-made as per the topic you are teaching. Say for example, और मैंने अभी two choices में उसको red identification सिखा रही हूँ. So if I'm teaching it by a Ludo, but I think you can imagine, I can't show you right now, but you can imagine Ludo खेल रही हूँ, उसमें मैंने सारे squares लाल और पीले के डरे हैं, because I am teaching, I am at a point जो मेरा task analysis में point है. अब छोटे बच्चे हैं, मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़ों की भी बात कर लेंगे. तो अगर मेरा ये पहली क्लास में बच्चा है, या अब तो हमारा न्यू पॉलिसी में बच्चा प्री स्कूल में भी हमारे रेगुलर स्कूल में आएगा, राइट. सो ऑल द these readiness skills can be taught in preschool. So we have an added advantage now. So जो भी हमारी readiness skills we can make sure in the regular school only whether they are learned or not. So TLM will play a very good role. So coming to my point again, कि TLM बनाना या लेना इज TLM वो इतना जरूरी नहीं है, उसको प्रेजेंट करना ठीक से, उसको बनाना ठीक से. दैट्स व्हाई वी डोंट डिपेंड ऑन द कमर्शियली मेड TLM, बिकॉज वो हमारे बच्चे के साथ हमारे जो गोल के साथ मैच नहीं कर रहे. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं 2 चॉइस में उसको रेड सिखा रही हूँ, और मैंने लूडो बनाई ओनली स्क्वायर से 12 स्क्वायर हैं, जिसमें 6 स्क्वायर मैंने पीले बनाए और 6 स्क्वायर मैंने रेड बताए. और जब डाइस खेलेगा जितने पे आएगा उसको कलर बताना होगा. रेड जहां जहां पे रेड है उसको अपने गोटी को वहां पे रखना पड़ेगा,
राइट। पर अगर बच्चा 3 चॉइस में होता तो मेरी जो लूडो होती वो 3 कलर्स की होती, तो TLM बदल गया ना। यस, are you people writing your comments? Where can I see the comments? Because I have, Yes, ma'am. okay, Ma'am, in your the right side, of the chat box, you can see a private chat. private chat. A private यार chat. कुछ नहीं आ Yes, रहा, on the 3 right डॉट्स हैं side. जहाँ। Ma'am, actually, you're sharing your screen, I ओके think, ओके at the ओके, moment. बाद में करती हूँ। Yes. There are couple Okay. of questions. Yeah, There are you couple of tell me how questions. much time I have, then I'll take question. You, I काफी, We we okay. have, ma'am. Oh, We have great. 40 So minutes, मेरे को ma'am. 25 minute I can lecture and then I can kind of. I didn't want it to be one Sure. way, Sure, but ma'am. I've heard Sure. that so many participants. तो generally मैं बोलती हूँ बीच में से भाई अपना माइक खोल के बोलो, तो ताकि I'm not getting that feedback. पर मुझे feedback पूरी मिल रही है because मुझे लग रहा है सामने मेरे तानिया बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, ये बैठी है, तो I'm like do my class. Though Tanya doesn't need it, so, but it's for me, so I'm imagining that it's easier for the teacher, when audience is in front. So next, तो ये तो हो गई आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो आप देख रहे हो टीचर को कितना कुछ प्रिपेयर करना है अपने लिए। एक मिनट, या so then collaborative teaching and buddy system. This technique we must learn, all of us, because जब inclusive education होती है, generally लोग ये कहते हैं हमें कि मैडम मेरे पास दूसरे बच्चे होते हैं 40 और आप इनको साथ भी कह रहे हो कितना मुश्किल है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई हैव डेल्ट विद देम माई सेल्फ। वाई आपके लिए मुश्किल हमें इसलिए हो रहा है बिकॉज यू थिंक यू आर द ओनली टीचर, यू आर द ओनली रिसोर्स एंड यू नो एवरीथिंग and you like to talk all the time. Teacher likes to hear her voice all the time, right? So हमको collaborative teaching करनी है, सबके साथ टीचिंग करनी है, बड़ी बच्चों के साथ। टीचर, बच्चे हमारी रिसोर्स हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें हम कहते हैं हम सबको इन्वॉल्व करें, बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, एंड जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने बताया था ना, जिस बच्चे के पास ज्यादा है वो, बच्चे के पास कम है वो, उसको ज्यादा मिलेगा कहीं से। तो ये बड़ी से जो उसका दोस्त है उससे हम इस बच्चे की हेल्प करते हैं जो थोड़ा पीछे जा रहा है, in whatever way. So it's a technique. You must understand what kind of buddy you should choose, how you should be choosing buddy, what he should be doing, क्या demarcations है उसके रोल की, कहीं वो उस पे हावी हो जाए कि I'm your teacher and you have to do whatever I tell you. So वो सब चीजें हैं, but use your children in the class as a resource and you will see that आपकी क्लास बहुत अच्छे से चल रही है. You will never feel this burden, but you have to plan it very nicely. आपको ये जो UDL को ध्यान में रख लेंगे जब आप, तो आपका सब कुछ प्लानिंग हो गई तो इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Then I always say creativity. Without creativity तो इंक्लूजन हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप देख ही रहे हो हर जगह अपने आप को आपको देख रहे हो बदलना पड़ रहा है, हर जगह आपको अपने तरीके को बदलना पड़ रहा है, हर जगह आपको अपना सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं. सो अनलेस यू हैव दैट नैक, बीइंग इनोवेटिव, कि मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में. कई बार आप सोच के कुछ आते हो वो वैसा होता ही नहीं. All of a sudden you have to change your plan, but with the same equipment which you already have with you, or the same material you have with you. तो ये creativity, ये innovativeness एक टीचर में होनी चाहिए. तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जब आप स्पेशल एजुकेशन में काम करते हो ना, तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमेशा होता है, which makes you a special educator, And I have a special regard for special educators or people who are dealing with children with diversities, because they have this something extra, and that's how these children are blooming. These children are reaching to the heights they are supposed to. Use reinforcement. Reinforcement सबको पता है, इनाम देना है, ये देना. No, use it correctly. Which technique to be used? Differential reinforcement देना है कि नहीं देना है, कौन सी ये देना है. Don't just take it कि giving chocolate is a reward. You have to think पहले से ही इसको क्या रिवॉर्ड देना है, कौन सा देना है, और कौन सी रीइंफोर्समेंट देनी है. Okay, so
सो ये सब चीजें ध्यान में अगर आपके एक टीचर के पास हैं, देन मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा इन्वायरमेंटल चेंजेस, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल दैट, आई थिंक मैं वो भूल गई, वो भी क्लासरूम मेथोडोलॉजी में आता है. सिटिंग अरेंजमेंट, दैट ऑल्सो टीचर हैज टू डिसाइड हु विल सिट along with her in the front lane, who will sit with who will be, you know, the backbenchers, and who will be in front, who will be the leader, all those things teacher will plan. Okay. सो देन और क्या आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग में, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. हाँ, ये मैं और इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ मैं. तो टीचर कैपेसिटी हो गई, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई टू द बेस्ट. इफ यू हैव एनी मोर सजेशन यू कैन गिव मी कि टीचर में ये भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. यू विल सी ये आप में अपने आप ही आता जाएगा, अपने आप ही आता जाएगा व्हेन यू नो डीलिंग विद द चिल्ड्रन. So then wide range of subjects to be provided and concessions to be given. ये अब आपको जैसे मैंने बताया जो हमारे टाइम पे एनवाइस क्यों आया था, इसीलिए आया था ना, कुछ बच्चों से ये सब्जेक्ट्स हो नहीं पा रहे थे जो स्कूल में दिए जा रहे थे, तो वहां पे सब्जेक्ट्स बहुत सारे दे दिए, चॉइस दे दी, टाइम ज्यादा दे दिया, ताकि इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो जो हु आर नॉट एबल टू कोप अप विद द करिकुलम. सो अब हमारे बच्चे और थोड़े से डेफिशिएंट है, तो हमने डिग्री तो इनको सीबीएसई की मिलेगी ना, बिकॉज योर एनी अदर बोर्ड्स यू आर एफिलिएटेड टू. तो हमें उन बोर्ड्स के साथ हमने बात करी, सब करी कि व्हाई शुड वी हैव मोर सब्जेक्ट सो दैट चिल्ड्रन हु आर एंड हिज ओन चॉइस रादर देन. जब मैं पढ़ती थी, और शायद बहुत लोग वोट भी आपके मदर्स जो भी, आई डोंट नो व्हाट इज द ऑडियंस काइंड, तो हमें सिर्फ 2 स्ट्रीम्स अलाउड थी, आर्ट्स और साइंस, और उसमें भी वो सब्जेक्ट सारे ही लेने हैं मुझे. I can't take economics with maths, और physics लेनी है तो chemistry लेनी है, biology लेनी है. And but now you have all kind of choices. So CBSE से कर करके I have those things also what CBSE had done. आपके कितने subjects हो गए? Number of subjects. So the children who cannot do those subjects which are difficult for him can choose those other subjects which are easy for him. और उसका अगर ये सब हम ये कर लें कि उसको किस तरह से सपोर्ट देनी है, किस तरह से उसको और इजी बनाना है, टास्क एनालिसिस कर ले, तो आई थिंक इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब मुझे हमेशा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा दैट व्हेन वी विल रीच अवर मकाम पे कि भाई अब हमारे सारे स्कूल्स आप जाके देखो कि इंक्लूसिव हो गए इन रियल सेंस. देन कुछ बच्चे जो है बड़े हो जाएंगे और नहीं कर पाएंगे स्कूल का, तो वोकेशनल एजुकेशन ये सीबीएसई ने भी डाला है, होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में. वोकेशनल एजुकेशन ऐसी दे जो कि उनको एम्प्लॉयबल बनाए, ठीक है ना. मेन एम तो यही है ना, आपने उनको सेल्फ एडुकेट बना दिया, सोशली एडुकेट बना दिया, इमोशनली एडुकेट बना दिया, इकोनॉमिकली एडुकेट करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन अगर दे दी जाए इंक्लूसिव स्कूल्स में एट अ सर्टेन स्टेज व्हेन दे आर, अब उनकी इतना इलास्टिक था, यहीं तक खिंच सकता, अब आगे नहीं जा सकता ये बच्चा, तो वोकेशनल में चला जाए. व्हाई वी आर सेइंग कि तेरे को 11th करनी है, 12th करनी है, आई एम जस्ट आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन. और अगर हमने उसको किसी ट्रेड में एम्प्लॉयबल बना दिया जो कि हो भी रहा है, तो हमारा बच्चा वहां से जब निकलेगा तो ही विल बी एबल टू अर्न समथिंग, राइट. सो उसका प्रोविजन भी इंक्लूसिव एजुकेशन में होना चाहिए. देन जब हम ये सब बातें कर रहे हैं, सब फ्लेक्सिबिलिटी की बातें कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन टेक्निक भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. वही नहीं कि सीबीएसई का एग्जाम होगा, आपने कुछ तो कंसेशंस है कि आप लोग को स्क्राइब दे सकते हैं, वो मैं बताऊंगी, मैंने आप मेरे पास है दिया हुआ कि वो क्या क्या आप उनको दे सकते हो, मैं आपको भी बताती हूँ सीबीएसई की तरफ से क्या क्या है. पर आपके इवैल्यूएशन सिस्टम को भी आपको चेंज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएट आप किसको करोगे, जो आपने पढ़ाया, राइट, उसी पे तो इवैल्यूएशन करोगे ना. अब आपने असेसमेंट तो करी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं आपको असेसमेंट कैसे करनी है और किस पे करी, और आप कह रहे हो इवैल्यूएशन करके भेजो. हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट. ओके, देन इज सेंसिटाइजेशन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कि बड़ा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो कहते हैं ना, जैसे नेक्स्ट जो है रिमूविंग एटीट्यूडनल बैरियर्स, कहते हैं ना आर्किटेक्चरल बैरियर्स है, फिजिकल बैरियर्स है, क्लासरूम बैरियर्स हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है एटीट्यूडनल बैरियर्स. अगर आपका दिमाग पॉजिटिव है और अगर आप कहते हैं कि यस माय चिल्ड्रन कैन लर्न, एवरीबॉडी कैन लर्न, तो
तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आपकी थिंकिंग चलती है और आपका एक्शन प्लान भी वैसे ही चलता है. कहते हैं ना, एक्शन, फीलिंग एंड सॉरी, थॉट, थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन. थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, कहते हैं ना, इस तरह से चलता है. अगर आपकी थॉट ये है तो आपका फीलिंग भी वैसी होगी और आपके एक्शन भी वैसे चलेंगे. सो एटिट्यूडनल बैरियर जबरदस्त है. अभी हम सोचते हैं कि बहुत हद तक सॉल्व हो गए हैं, बट अभी भी सब्जेक्ट, मतलब still people have negative notions about our children. They are still ridiculed. They are, there's still a stigma in the society. So we should have lot of sensitization program. And sensitization के program के ऊपर आपकी एक workshop हो सकती है. किसके लिए sensitization करोगे, किसके लिए awareness करोगे? What should be the strategies for awareness programs? You can have various target groups because you need to have. अब होता क्या है, हमेशा हम अवेयरनेस करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मतलब हमने अपने बच्चों को, पेरेंट्स को बुला लिया, उनको सिखा. We should be doing awareness for the parents of the regular school children, for the regular teachers, for the principal, जो कि लोग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, but it's not like massive at massive scale पे हो रहा है. कभी MHRD कराते हैं, कभी गवर्नमेंट कराती है, दिल्ली गवर्नमेंट कराती है. At different levels programs are happening, but still I think at our levels also we should keep creating awareness programs for various target groups, for doctors, for counselors, for let it be anybody, for bureaucrats, for the policy makers, for everybody, for society, जहाँ पे eventually society में जाके हमारे बच्चों को set होना है, fit होना है. So they all should be made aware. And awareness about what? Awareness about so many things. So you have to decide what should be the material you will be using. Awareness material क्या use होगा. So we generally like have नुक्कड़ नाटिका because lecture कोई सुनता नहीं है. आप भी बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, I'm sure. मैं तो बिल्कुल बोर नहीं हुई because this is my job, I think. मेरे को आदत हो गई है बोलने की, बट आप लोगों को सुन के लग रहा होगा अब थोड़ा सा उठ जाए, बिकॉज सम ऑफ यू वुड बी अ ऑडियो लर्नर, सम ऑफ यू वुड बी अ काइनेस्थेटिक लर्नर. उसको उठने की इच्छा हो रही होगी, आप उठ सकते हो अपनी जगह से, बट फिर भी सुन सकते हो मेरे को, इवन इफ यू आर अराउंड द रूम. सो और कोई जो है विजुअल लर्नर है, अगर मैं ये शेयरिंग स्क्रीन बंद कर दूं और सिर्फ बोलती रहूं तो वो तो सो ही जाएगा, बिकॉज इज अ विजुअल लर्नर. So, but I'm only using these two methods. So many of you may not be benefiting at all because I'm not using many ways of presentation, right? So my teaching may not be perfect teaching because I'm not keeping into consideration all the learners in mind. So, तो ये sensitization बहुत, हम एक नाटिका बनाते हैं, which people really, मैंने कहा ना लेक्चर कोई नहीं सुनता हमारी, फिल्म भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, बट जब हम नुक्कड़ नाटिका करते हैं और एक्टिंग करते हैं और वहाँ जो एक फोर्स के साथ स्लोगन्स करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुनने आते हैं कि ये कह रहे हैं. एंड देयर वी टेल लाइक हाउ अ प्रेग्नेंट लेडी शुड टेक केयर ऑफ देम, व्हाट कुड कॉज disability before pregnancy, during pregnancy, after pregnancy. So ये सब चीजें जो है हम sensitization awareness program में कर सकते हैं. अगर ये सब होगा रेगुलर स्कूल टीचर के लिए कि भाई ये जो मिथ है जो लोगों के दिमाग में है कि इंक्लूसिव एजुकेशन से रेगुलर बच्चे पे बुरा असर पड़ता है, और वो भी उनके व्यवहार वो सीख लेते हैं जो तो मैं कहती हूँ वो तुम्हारे व्यवहार क्यों नहीं सीख सकते, और आपके घर में और भी बहुत सारे लोग डिफरेंट व्यवहार कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ देयर सिमिलरिटी. जैसे घर में कई बूढ़े होते हैं या सम पीपल आर डूइंग सम बिहेवियरल प्रॉब्लम, तो डू यू फॉलो दोस? यू हैव दैट इंटेलिजेंस टू रैशनलाइज what is good for you, what is not good for you. Whereas it's the other way around. They will learn from you and you will get sensitized that this is how they behave. This is their way of expression. This is their way of telling you something, So you will get used to their ways of communication. Yes, yeah. So I wanted to tell you, ये इतनी सारी struggle के बाद, इतने सारे NCERT ने बहुत काम किया है इंक्लूजन के ऊपर.
एनसीईआरटी के साथ बहुत काम किया है. दिल्ली गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. Lot has been done, but still we have miles to go. I think you all agree with me. ठीक है. So इन्होंने हमें ये सब बताया है. You know, एग्जाम्पशंस क्या दिए गए हैं हर कैटेगरी के लिए. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या दिए गए हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए क्या कंसेशंस मिले हैं. स्क्राइब है, रीडिंग आउट है, टाइम ज़्यादा है, ये सब है. अगर मैं पढ़ने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा आई थिंक. So I'm just telling you कि क्या क्या है इसमें. It's all available. If you want, I can tell you the source also. And let me tell you, there is one book which has come out by CBSE. I hope you have seen it. And अभी recently only. तो आप वो किताब पढ़ लेंगे तो you would get everything you need to know about inclusive education. Okay. Then physical disability के क्या है, leprosy, cerebral palsy, ये सारे dwarfism and all that, इनके सारे exemptions और concessions क्या दिए गए हैं, सारों के भी दिए गए. visual impairment के दिए हैं, mental behavior, multiple disability, ये सब आपको पता होना चाहिए if you are working in inclusive education, because आपके पास हर तरह के questions आते हैं कि मैडम मेरा बच्चा ये है, मेरा LD है, मैं कहाँ से सर्टिफिकेशन कराऊं, मुझे इसको कंसेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो इसके आंसर्स आप सबके पास होने चाहिए. और अगर आपके पास आंसर्स नहीं है तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि वेयर टू रेफर. राइट, दैट इज इक्वली गुड. एवरीबडी डजंट नो एवरीथिंग. हम भी अभी बहुत लोगों को सब जगह भेजते हैं. यू कांट हैव एवरीथिंग विद यू. So you have for hearing impairment, you have it for, this. Then we also have डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्राइब एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, कि स्क्राइब किसको मिल सकता है वो बताया गया है. देन फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट, सारी फ्लेक्सिबिलिटी 10th में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है. थिंग्स आर सो इजी नाउ, बट कह के अभी भी हम कई बार सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट तो रह गया, हमारे बच्चे अगर वो ले लेते तो बहुत अच्छा हो जाता. एंड देन क्वेश्चंस, अल्टरनेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. जैसे अब अभी इस मोड पे जाके कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है. गूगल फॉर्म पे हम लोग सबके टेस्ट ले रहे हैं, MCQs बना रहे हैं, which we never did earlier, right? So every situation is teaching us. So when we do inclusion, actually do it, actually face the problems, we learn a lot. And this जो भी मैंने आज आपको बताया, this is the result of our own actions into inclusion, and actions of my friends like you. So okay, so basically accommodation modifications ये हैं. Exemptions in the third language, extra time, large font, assistant in reading, prompter, classroom accommodation, visual clue, scribe, modified question paper, modified co-curricular activities, assistive devices, disable friendly toilet, lift, signages, accessibility. ये इस तरह के जो है, ये मैंने छोटा सा निकाल के आपको बताया, just to give an idea कि इस तरह की accommodation, modification, exemptions मिलती हैं, जो हमें देखनी पड़ती है कि इस बच्चे को मिली हुई है, चाहिए उसको, और उसको मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है. ओके, सो ना जो भी मैंने अभी आपको बताया, कीपिंग इन व्यू दिस मैंने ये लेसन प्लान बनाया. आप कहोगे मैम हवा में बात कर रहे हो, लेसन प्लान बन कैसे सकता है इंक्लूसिव क्लासरूम में. और मैंने एक बड़ी क्लास का ये लेसन प्लान लिया है आपको. आई थिंक आई हैव 20 more minutes with me, and then we will have questions. Okay. So basically, environmental studies से 5th class की every drop counts. It's a very important topic even in today's world. Water is just going, खत्म हो रहा है, and still we are not understanding. नीचे तक जा ही नहीं रहा है, बस सब यही कह रहे हैं कि पानी खत्म हो रहा है. पर चलो आज तो मेरे को मिल ही गया ना, आज तो मैंने नहा ही लिया, आज तो फेंक लो जितना फेंकना है, वो एक आध देखा जाएगा. So content क्या है, पहले you have to write down the content. मतलब I'm not saying you all have to make such elaborate lesson plan, but I'm just telling you how elaborate, if अगर आपको ये सब questions पता होंगे, दिमाग में होंगे, तो how you can make your teaching so easy and effective. Okay,
So step wells, their importance in use, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आप ले रहे हो, पर मैं अपना कंटेंट कम भी ले सकती हूँ. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर कंजर्वेशन, यस, जो मैंने पीछे लिखा है एक कि मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग सिर्फ यही है इस टॉपिक के. सो इट इज ऑल अप टू यू. अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिपेंड करता है कि आपने कंटेंट कितना लिया है, राइट. The student will be able to understand the importance of water in daily life, identify the causes, suggest the ways to conserve, enumerate the importance of step well, locate the places having step wells in the political map. अब अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं नीचे के तीनों निकाल दूंगी, राइट. सो मैं बेसिकली मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चों को ये पता चल जाए हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज एंड हाउ वी कैन सेव वाटर, how we can conserve water. If I can get across this much to my children, I am good enough, right? तो मेरा कंटेंट भी बदल गया, मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी बदल गए. आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी आप कुछ कह लो, मोटिवेशन हम सब करते हैं. यू ऑल नो अबाउट, आई एम प्रिज्यूमिंग यू ऑल नो अबाउट इट, बट मैम टोल्ड मी, तान्या मैम टोल्ड मी, वी हैव डाइवर्स audience. You know, some are very high at professional level, working in the, you know, at professional professor level and lecturer level, and some are just special educators. So I think for some of them it will be useful. We all do it all the time, right? So हम जब ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज करते हैं, इन अदरवाइज मोटिवेट करते हैं, तो अपने बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हैं सो दैट आई कैन रीच टू, हम पढ़ाते नहीं है बट आस्किंग दोज क्वेश्चन आई रीच टू द टॉपिक आई प्लान टू टीच, राइट. मोटिवेशन सबको पता है, कहते हैं ना, यू नो क्या बोलते हैं उसको, क्यूरियोसिटी को अराइज करना, अराइजिंग क्यूरियोसिटी इन द चिल्ड्रन टू लर्न द लेसन. ओके, प्रायर नॉलेज बहुत जरूरी होती है, ठीक है. अब आइस ब्रेकिंग में आप ये भी पूछ सकते हो कि टेकिंग 5 मिनट शावर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस लेस वाटर, आप उनके से कर सकते हो, आपके ऊपर है, यू नो, इट इज अप, बट वी आर जस्ट गिविंग यू दैट यू कैन गिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइक दिस. तो जब वो कर रहा होगा, द चाइल्ड हिमसेल्फ विल फील कि यू नो व्हाट आई यूज, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी. रनिंग द टैप व्हाइल वॉशिंग यूटेंसिल्स, अ लीकी टॉयलेट, लॉन्ग शावर्स, ओके. सो यू विल से ओ माय गॉड, या. So while doing this only, you will say, oh, this is something wrong and I must learn how I can save water. So prior knowledge. What is the prior knowledge? You can say baseline, you can say, you know, or requisite, whatever. Prerequisites, जो भी आप कहना चाहे वो कर सकते हैं. Okay. Then teaching learning material, what material you will use, whether you will be using the concrete things, obviously you will be using everything. You will be using the flashcards, you will be using the model, you will be using the, you know, the material to make a model, and maybe, yeah, rainwater harvesting की site पे भी आप ले जा सकते हो. I mean, making a visit, that also you can take. So many things you can do. Now, the point I was coming is, so while you are teaching, you have to take care of, all these learners in your class. We all know we have different kinds of learners in your class, visual learners, kinesthetic learners, auditory learners. You don't have to know who's visual, who's kinesthetic. Make your, I mean, again, presentation आ गई, okay, content देख लिया आपने, अब presentation कैसे करनी है, keeping in view all these diverse learners. कोई visual है, कोई kinesthetic है, कोई auditory है, इनको आपको ध्यान में रख के हुए करना है. Visual will learn with the help of models, flashcards, videos. Kinesthetic will learn with the help of, by creating a model of a rainwater harvesting. उसको करना है सब कुछ using his own body movement and all. Auditory will benefit from a discussion on conservation of water, you know, on some discussions, group discussions and all. What do we say? Tape recorders or, you know, films and everything. Okay, so this is the method. I don't want to get into that. So आपने वो सबके दिमाग में कर लिया. Yeah, now, so observation. Now you can keep observing कि does the child has what all did he observe. Let me not do this. Okay, I just want to show you this.
Yeah. So these are the various ways. uh, Activity. Take a look around the house or the school and find 3 places where water is used. Fill in the chart below to show how water can be saved more carefully. You can write or draw. This is on the basis of this topic, right? So, places where water is used, uh, ways water may be wasted in this place, ways people can save water in this place. The child has to, the people have to find their, you're not teaching anything, children are doing on their own. Okay? Through storytelling and PPT prepared by the student under the guidance of a teacher, my journey of ancient Indian step well and the step well during Indus Valley civilization, teacher will explain the importance of step well and its use in earlier times. Okay, vessels made of clay, copper, brass will be shown to explain to the students about the storage. Through the political map of India, teacher will help the students mark places in India where step wells were used for water conservation. The teacher elicits information from the students about ways in which they can use water wisely through a lively discussion. So, can you see what all, how we are presenting the information? How many ways? Then the teacher will discuss more ways of conserving water, rainwater harvesting method, water cycling, drip irrigation in the fields, etc. through flashcards, 3D videos, and models. Now, this is what I wanted to tell you. Now, each student in the class will, this is the minimum levels I've designed for my learning. That's what I'm saying, that for this lesson, the minimum levels would be appreciate the role of water in daily life, understand the need to save water, suggest ways to conserve water, use of step well in ancient times. Again, depending upon the children in your class, you can have your minimum learning outcomes. That this is what I want. That इतना तो मेरे हर बच्चे को आना ही आना है. Yes? Then obviously you will recapitulate or wind up, wrap up, whichever way you want to. And different children, that's the, I mean, you can give some home exercise where again the child will use all his modalities to work. And you can take a feedback by making these MCQs. Okay. Okay. So, was it too much for you? So, I think in this 1.5 hours presentation, we have seen that if we are talking about making inclusion, providing quality education through inclusion, I think we have to go an extra mile, right? And we also saw what all is, we talked about the nitty-gritty of inclusion during today's session rather than just talking कि क्लास में ये होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर फ्री होना चाहिए, एटीट्यूडनल पॉजिटिव होने चाहिए. We also talked about how it can be done, right? So, having said that, I would expect, you to make a checklist, okay? Like we have made here a checklist. Like this, all should be there. If you test a school whether this school is ready for inclusion or not. So this is a kind of a checklist for you to see. Answer these questions in yes or no, and if you find no to any of these answers, then obviously you are not yet ready. Does the school have inclusive practices in its vision and mission statement? Inclusion है आपकी philosophy में, आपके vision में कि नहीं? Have barriers that prevent the school from being inclusive? Right? Have school I don't think the answer would be yes or no either. You have to see what is yes, what is no. Have school administrative principals, teachers, and students who understand the importance of inclusive education? Does your school have any special people working as teacher or staff? Okay, do you have people working? Ma'am, I'd like to add to this.
Ma'am, instead of yes and no, can we have this to some degree? Say, for instance, to some extent, to a great Scale, right. extent, a Very scale. good, very good. We can have a Ah, scale. Yes, those are the kind of suggestions I'm looking for. But I'm just giving you some kind of indicators. You can have your own indicators also added to each category, just to see कि हमें ये सब करना है. You know. Yeah, I think Tanya's suggestion is well taken, and you can have a scale here. On a scale of like to some extent, yes, to some extent, to full extent, right? But yes and no also can be done. Like either you will have to reframe the questions then, but it can be done how you want to see. But you have to see all these things. Yes. yes, ma'am. Yeah. So have school and now about the environment. Does your school have a welcoming, healthy, and clean environment? School have a clean, safe drinking water supply accessible to all children. Water accessible है अपने बच्चों के लिए. Have separate toilets again accessible. Have facilities that are accessible for students, not only the classrooms and all, the library, the canteen, the sports place, common room, everything, whatever is there. Ramp, rails, lifts, special arrangement, library, laboratory, everything. Have staff room from different backgrounds, men and for different background, for men different, women different, languages, ethnic group and all. Have teachers who can explain the meaning of inclusive and learning friendly education. Do you have teachers who believe all children can learn, including children with disability, ethnic minority group, girls, poor, etc.? Do you have teachers who can identify unhealthy students and advise families to access medical care? Do you have teachers who understand students having individual learning needs and can adapt lesson plan and activities to meet the needs of all students with diverse backgrounds and abilities? Do you have teachers who use variety of teaching and learning materials to help students learn? Now, teaching development. Do you have teachers attending program like you are attending today, or other various faculty programs where you are given education on inclusive education for various disabilities? Okay. Do now about the students? Do all students, school age student in the community attend school regularly? Do all students have textbooks and learning material to meet their learning needs? Do all students actively participate and contribute to the activities in the classroom? Whether the child is in a wheelchair or on calipers or whatever, even if he's not interested in getting up, is he participating? Do children with disabilities have an individual education plan? Sorry. Is there a regular follow-up in the attendance? Are they attending regularly, or there are too many absentees? Now, academic content. Are locally available resources utilized for easy or learning support? Does the curriculum promote attitudes such as respect, tolerance, knowledge about one's own and other cultural backgrounds? Yeah, I missed one point, about the life skills. Again, very, very important. Life skills का curriculum जो कि हो ही गया है अब integral part of the curriculum is very, very important. It's not only good for regular children, but it is very good for our own children. And through stories, we can teach all life skills, like awareness about your own selves. What am I? Our children generally have a very low self-esteem, children with disability. तो छोटी छोटी स्टोरीज के जरिए जो आपका चूहे और कौन सी कहानी है वो लॉयन एंड माउस की कहानी से आप उनको सिखा सकते हैं, like the value of critical thinking, the value of working united, the value of self worth. इतना छुटका सा उसने इतने बड़े शेर के सामने कह दिया, yes I will be of some help to you. इसमें courage चाहिए ना. So you should have that worth about yourself. You should know your worth. तो ये बड़ा important है ये अपने curriculum में. Does the curriculum allow for different teaching methods such as discussion,
role play, puppetry, meeting different learning styles, uh, uh, learning rates and styles, particularly for children with disabilities. Then does the school provide all concession जो कि listed है CBSE के उसमें? Okay. So ये बनाया गया, you can add your own. And these are the checklist. If you are interested, I can give it to you. I can mail it to madam, and she can mail it to the people who are interested. There's no point giving it to everyone. So these are basically for the teachers, identification of children with various special needs. Indicators क्या क्या होने चाहिए ताकि आपको पता चले ये बच्चा ये है, ये बच्चा ये है. But these are all, this information is only for the teachers to plan for them, and not for just saying कि मेरी क्लास में 4 physically handicapped हैं, 2 मंदबुद्धि हैं, 2 hearing handicapped हैं. That loses the whole value of inclusion. Okay, they are all children. They are Pankaj, Neeraj, this. But in your mind, you know that this child is having this thing. But the time will come, we will never even talk about autism or learning disability or this. Everybody will be a child, and we know which child is what, and so that time, I'm waiting for that time, that there will be no name, no label to a child. All will be children, and they are learning in their own ways. So this I'm not giving, Tanya ma'am, if you agree, we can take questions, because I would like to take questions. Such an important topic, and it will help me also to see how others think about this, What do you say? You want me to? Absolutely. This, No, or ma'am, shall there are few questions. I think that will add on to what you're saying, because questions are quite a few, about 8-9 questions are there. So, ma'am, can we take them up? Okay, up to you. So this checklist I'll give you if you don't have. Yes, ma'am, please do. Ma'am, we'll mail it to the participants, those who are in requirement of it. Who are interested, yeah. Yes, we'll do it. Yes. Ma'am, you want to continue? If there is something more, you can continue, ma'am. I don't think so. I have this checklist. This is what. Ma'am, maybe you can. Yes, ma'am. So what I'm saying, all these things, they have to be there at a system level before. मैं बार-बार ये कह रही हूँ. They should be there at a system level. All these ingredients should be there in a very in the beginning only, in the right quantity, in a timely manner. Right? हमने ये तो लोग तो रख लिए, but हमारे पास books नहीं है, हमारे पास evaluation की techniques नहीं है. So, everything has to be there. And as I said, we are progressing, but we still have miles to go to achieve our ultimate goal. Where, there are proponents, if I can read it out to you, the proponents of full inclusion, वाले लोग क्या कहते हैं? Proponents of full inclusion, they believe that pulling a child out of classroom, जो हम करते आए हैं, to provide special education or placing the child in self-contained classroom or special school is inherently unequal, inferior, and therefore immoral. So हर तरह के philosophies हैं, पर हम चाह रहे हैं, धीरे धीरे, first इनका हो जाए, फिर इनका हो जाए, फिर इनका हो जाए. But this is how there are some people who think that they should all be in the regular class. But some people think, no, they should be prepared in the special class and then brought to the regular class. But the ultimate aim is, but we all are aiming at one thing, that we should have full inclusion one day where all children without any label are studying meaningfully with quality along with their peers. Thank you. Ma'am, beautifully expressed. I think I agree the entire essence of the session, that, working towards an aim that one day all children are just children, and they're not, labeled and categorized, and they are just receiving education together harmoniously, and
There's no differentiation. So that is the essence and the beauty, I think, of the entire discussion and your Yes. session, ma'am. I agree. You how beautifully put, ma'am. Thank So, you. I hope, so I hope, I hope my friends, all the dignitaries who are attending this session, I hope uh, they found something out of the session. And please do write to me. Please share with me your thoughts. It will help me to kind of rethink my concepts and add more to my um, resource of inclusion. Hello? yes, ma'am. Yeah, I can't see anybody. How do what? Ma'am, you'll have to stop sharing the screen, ma'am. अच्छा, click to exit करूँ ना? हाँ. Oh, I'm again sharing now. Okay. So what did I do? No, we can see you, ma'am. We can see you. Oh, okay. Then it's fine. Then it's fine. Yes. So, Okay. and we'll just take one or two questions. We'll try to club most of the questions because they are very common. So we'll just try to take those and then we'll close the session, ma'am. Yes. Pratibha, ma'am, please take the questions. Right, ma'am. Um, Ma'am, the very first question is from Miss Rekha Rajwal. How to meet individual differences in inclusive class? Okay. A very common question, but I think I've answered during my, and very, very legitimate question, very important question. But that's what I've said. You have to change. You should have the capacity to change your instruction as per the need of a child. जैसे अभी बताया, you will have to present in a different way. You will have to, your instruction should be different for a child. As I've just given you, let's take an example. Okay, there are different abilities in the classroom. That's what you're asking, right? Repeat your question. I'll think of an example. Yes, ma'am. How to meet individual differences in Right. inclusive class? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं बेटा? आपको ये देखना है, आपको पहले से ही सोचना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होंगे, कि एक बच्चा ऑडिटरी लर्नर होगा, एक बच्चा जो है अटेंशन नहीं ज्यादा पे करता होगा, एक बच्चा जो है कानेस्ट्रिक लर्नर होगा, एक बच्चा जो है शायद उसको बोर्ड से कुछ दिख नहीं रहा है, राइट? सो यू हैव टू कीप इन व्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो आपका जो मैंने अभी बताया यूडीएल और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, आप जो भी पढ़ा रहे हो आपकी इंस्ट्रक्शन बदल जाएगी. अगर आपका बच्चा जो नहीं सुन रहा, आप उसको ये नहीं बोलेंगे बताओ, जिसको नहीं बोलना आता और नहीं सुना, बताओ इसमें से रेड कौन सा है. व्हाट विल आई से? ओके, आई विल जस्ट शो दिस, शो मी दिस, आई एम शोइंग रेड एंड ही शोइंग मी हियर, राइट? सो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बदल ली, बच्चे का रिस्पॉन्स बदल गया. बच्चा इज pointing it out on the, I've given him the multiple clue and the child is pointing out the correct answer in that clue, and I've given him the visual stimulus, right? So I changed myself. Similarly, जो दूसरा बच्चा होगा उसके मैं बोलूंगी ओके गो गेट, जो भागता दौड़ता ज्यादा है, ओके गेट, देयर आर इन दैट बॉक्स देयर आर ऑल रेड एंड ब्लू कार्ड्स देयर, गेट रेड कार्ड फॉर मी. तो मेरी इंस्ट्रक्शन बदली, उसका एक्शन बदला, आउटकम दोनों का Yes. कि रेड लेकर आया. यस, Yes. Yes, Absolutely, ma'am. तो ये जब साथ साथ काम करते हो ना, आपको खुद पे खुद आ जाता है. दिस टाइम हम लोग, वी वेंट टू अ रेगुलर स्कूल फॉर इंक्लूसिव टीचिंग इन द प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, एंड यू वुडंट बिलीव वी वर टीचिंग लाइक दिस through stories, through story cards and games and all that. The other children became so happy and other children became so curious to learn more. And we were there only for 2 weeks. And they said, you should come every day. Because we were teaching the same lesson with these activities.
asking these questions to different children, and others are watching these children when they are doing it. So what I'm trying to see tell you is that we planned for our children, but actually it was effective for the whole class. And this is the beauty of inclusion. UDL ना सबके लिए आपने बनाया, बाकियों की तो जो लेवल था उससे ज्यादा ही था ना. और जब हमने ये एक्टिविटीज डाल ली, एवरीवन एंजॉयज एक्टिविटीज बिकॉज इसमें सारी उसकी इट्स अ मल्टी सेंसोरियल लर्निंग. दे ऑल एंजॉय, एंड व्हेन दे एंजॉय दे लर्न मोर, or they are interested also. So the whole class was like alive. Ma'am, there are Right. actually there are a lot of in the chat box as a response to your explanation. What is coming out? I think majority of the participants are saying ki because they are trained through a normal B.Ed program, and inclusion is something which is very recent into the B.Ed curriculum. It's not been when we were trained as teachers. So Yeah, somewhere there is, even if the intent is there the goodwill is there that we want all children to learn together, to learn joyfully. The basic thing is we don't really have the skills, and to begin with actually even the knowledge to identify the children, and then mm, what kind of special curriculum strategies we can adopt. And then, like this very beautiful thing that you said, that activities are such where it's like creating a sense of self-worth. Now there's another yeah, question in the chat box which is saying that how do you sensitize children who are so called normal towards children who are specially able. I feel that when activities are planned in a manner where every child gets a sense of self worth, तो सामने वाले बच्चे को भी लगेगा कि look, this person is also doing so beautifully. So, exactly. so the Uh, whole onus is basically on our training. I feel what is central is a lot of focus to be given on training of teachers for inclusion, ma'am. That is very important. yeah, that's what you are doing, Dr. Tanya. And Yes. this very normal. How the regular school teachers are feeling is very, very normal. Should not feel when you have never read anything. How can people expect out of you that you should know everything? How to Yes. identify, how to assess, and then how to teach these children. So, but you said you have a will and you have an intent. If you have these two with you and you have a belief, you can learn. There are various ways of learning things. Um, RCI has come out with, I think, whether they have it or not now, modular courses, Like earlier, we had this foundation course for the regular school teachers, we had this module course only in special education for regular school teachers. And now, with a lot of क्या बोलते हैं, discussion with these people, university people and all, we got this one paper added in the B.Ed curriculum. In our time, there was nothing, no, nothing like this. Only there was one paper used to be there, education of backward children. But now, you have a paper on special education, I think, right? Yeah. Yes. So as Tanya is saying, but in order to deal with this inclusive education and in order to make inclusive education successful, we have to kind of, uh, um somehow, you know, develop these competencies and skills so that we are successful in the inclusive education. How? Like Tanya is doing, she said very rightly, we should have, like, as I said, each component of inclusive education, you should have a workshop, one day only for assessment for all the disabilities, one day only for identification, one day only for teaching strategies, one day only for, um, TLM maybe. So likewise, you will learn. But we have to spend time. Nothing will happen on its own. Nothing will happen, आपको पता है, पर कैसे करोगे? So nothing will happen without spending time, without sparing time, without taking special time out, मतलब taking out special time for this to learn.
Only then we can make a difference. But anyway, you Agree, got ma'am. concept of inclusive education, that what we are expecting, what government is expecting us, or what we are expecting, what parents are expecting, and what should be expected. That's what, if I have been able to get across that to you, I think my objective is achieved of today's. Yes, ma'am. Agree. Ma'am, any more questions, Pratibha ma'am, or can we close the Ma'am, session? Any other? one last question we'll take. It is from Ms. Rupali Srivastava. As a leader, how can one ensure that the teachers are positive towards the children with special needs who are handed over to them, accepting the child wholeheartedly? Again, beta, it's a question of sensitization. So you will have to adopt ways of sensitization. You should have various workshops where people are told what disability means. As I said, workshops, people don't take interest. You should have some Nukkad Natika or some films, which will sensitize these people about disability. And we should always display their positive characteristics. Take them to a place where the disabled people are doing so well. So show them those examples. So display their positive characteristics, tell them what all they can do. Is they are not only burdens. So like that, is demystifying their myths about disability. Right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for patient hearing, listening. So wish you all very best. But I may tell you all, because you're such a big group, to see what we are doing in our school. Not in inclusion, it's a special school, but other things. You can go to the Facebook page, which is called Anand. Just type Anand, Ananth, Anand Center, like it's written under my name, and you will see what all we do in our place. And you're most welcome anytime to meet me, to talk to me, give your feedback at my email address. Thank you once again. All the Right. best. I, on behalf of the whole AI family and the entire teaching fraternity, spread my most sincere thanks to the keynote speaker of the session, Dr. Usha Grover ma'am, who gave her vital time from her busy schedule to grace this session. I would like to convey my sincere sense of gratitude to you, ma'am, for highlighting such important key issues about inclusive education, discussing about various policies and schemes of inclusive education, RPWD Act 2016, how can we make inclusion a big success, about barrier-free environment, about making teaching learning accessible, and many more other things. I would also like to thank Dr. Tanya Gupta, Principal AIE, for her constant support and guidance for the faculty development program. I am really grateful to all our esteemed participants who are attending and actively participating in this 1 week online faculty development program. I would also like to thank our technical support, Mr. Manoj Kumar, for his constant efforts to conduct this faculty development program. Every national anthem is so melodious, yet the most soothing and touching one ends with Jaya He. With this, I request everyone to please rise for national anthem. Over to you, Manoj sir. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे कर जय गाथा
जनगण मङ्गलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everyone. We will be meeting again tomorrow at the same time for another interesting session. Till then, stay safe. Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. I should be thanking you for giving me this opportunity. We are honored, ma'am. Thank you, ma'am.